So three, two, one. Mamidipudi, Ramakrishna Sharan. Very, very warm welcome to Lights Camera Azadi. Thank you so much. It's been a long time since somebody has tried to tell my full name, pronounce my full name. So very excited to be here, including on that accord. थैंक यू शरण शरण मेरी रिसर्च बताती है कि आप मल्टीलिंगुअल हो, आप बहुत सारी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो, मतलब इंग्लिश, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, हिंदी, ये सही है? ये बिल्कुल सही है बिकॉज बेसिकली मेरे बैकग्राउंड ऐसा है कि आई ग्रो अप इन कर्नाटका बट माई पेरेंट्स वर नॉट कन्नड़ा स्पीकिंग. So my mother is actually a Tamilian from Palakkad, which is in Kerala. So she grew up speaking a mixture of Tamil and Malayalam. My father is actually from a village called Mamidipudi, but the hometown, the place he grew up in was Nellore. Nellore is now in Andhra, but again it's a Andhra Tamil Nadu border. So he's a Tamil speaking guy, but from with a Telugu in his Telugu state. And my brother and I were born in Karnataka. So basically South ka pura ek mix ho gaya. So Malayalam is the only language that I cannot speak at all, except for imitating their accent. But uske alawa baki South languages, yes. And then I went to Delhi for college, so wahi se Hindi, and of course Hindi movies. But that's why Hindi became another language. And like, I'm kind of confident and proficient in speaking. आपकी किताब अभी खत्म करी, मतलब मेरे जहन में एकदम फ्रेश है आपकी किताब. ये सारे कैरेक्टर्स इज जस्ट लाइक दे आर इन, ऐसा लग रहा है कि मैंने उनको बहुत क्लोजली देखा है. मुझे बोलना पड़ेगा शरण, आपने अपना जो काम करा है, ये इसका कंट्रीब्यूशन जो है, ये सिर्फ एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट आपने, मेरे को ऐसा लगता है कि बिहार की हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डॉक्यूमेंट करा है. एंड और उसको आप उन लोगों को आप हमारे तक लेके आए, और मे बी भगवान ने चाहा तो शायद मे बी लार्जर ऑडियंस विल सी इट, मे बी थ्रू फॉर्म्स ऑफ मूवीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज एक्सेट्रा. तो पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं शरण, ये किताब मतलब वेरी वेरी, मतलब इम्प्रेस्ड एंड वेरी प्राउड ऑल्सो फॉर व्हाट यू हैव अचीव्ड. Thank you so much. The big goal actually was that जो चीजें हमने देखा है बिहार में, as soon as I got there, and even before Bihar, I did fieldwork in Andhra. मुझे हमेशा लगता था कि ये सब चीजें जो हम देखते हैं, why am I not reading about it? Or why is it that what seems so obvious to me is not being seen by the outside world? So that was the main goal actually. So I'm glad that even you feel that way, and it's reached so many people. शरण, थोड़ा सा मतलब ये बताओ ना कि ओवरऑल आप साउथ में ब्राउन बॉटम, ओवरऑल थोड़ा सा लाइफ जर्नी बताओ, कहाँ से, हाउ डिड दिस चेन ऑफ इवेंट्स हैपन, एंड when did you ended up and what led you to ended up in Muzaffarpur? Like ये Yes. कहाँ से हो, पूरा जर्नी थोड़ा सा कवर करो प्लीज. So basically, I grew up in Karnataka, in a university town called Manipal. Manipal is actually famous for its medical college and its engineering school. It's a university town. It's on the coast, and my parents are doctors in the hospital there. And वहाँ पे 12th तक मैंने वहीं पे किया है. And it was a very nice kind of quaint kind of existence. But for some reason, I was sure I didn't want to do engineering or medicine, even though I took the standard physics, chemistry, maths, biology track. And then at some point, I think 11th, 12th में मुझे लगा कि biology तो नहीं होगा, and then after that physics also started becoming a bit of a pain. So then I said, okay, let's do history. So my basic goal was actually to try and do history. But an aunt of mine told me कि तुम दिल्ली जाओ, but history मत पढ़ो, history में कोई future नहीं है, कुछ और पढ़ो, economics ले लो, economics में थोड़ा और ज़्यादा scope है. And I think she was not right, but anyway, it was good. In the end, it worked out well. So I applied to Delhi University and I got into this place called Hansraj College, which I think is famous also because Shah Rukh Khan went there. And but but when I got there, it was I went to the hostel in Delhi University, and that was actually my first interaction with Biharis because मेरे hostel में there were two gangs. There was a Bihari gang and a Jat gang. And very early, irrespective of whether you're South Indian or Assamese or wherever you're from, you have to choose between the two kind of gangs. And I chose the Bihari gang. I don't fully understand why I did it. One of the reasons was my local guardian actually was a Bihari. So that was part of the reason, I think. And I was staying with them for a bit before I joined the hostel. So मुझे लगा कि that was my first exposure to Bihar and the lives of people there, even though it was a very kind of remote exposure. ऐसे नहीं था कि मैं गांव में था, गांव में घूम रहा था, या बिहार भोजपुरी या मैथिली में लोग बात कर रहे थे. It was still Hindi, it was still Delhi. But that's basically how I got into Delhi University and Hansraj College. And there I made like friends for life. I think Hansraj was a brilliant place in that sense. Much more than what I learned in the college and in the classes. It was the friendships and the bonds I made that I think lasted the test of time.
उसके बाद आई डिड अ मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी. आई वेंट टू द दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. वहां पे 2 साल किया. एंड आई थिंक अराउंड द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर आई फिगर्ड कि मुझे रिसर्च करना है और मुझे वापस कुछ फील्ड वर्क करना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने कर्नाटका के कुछ गांव में, 4-5 गांव में, आई डिड सम फील्ड वर्क एंड आई वाज लाइक, ओ दिस इज इंटरेस्टिंग, आई हैव नॉट डन दिस बिफोर. I spent some time in a village and I thought, oh, this is something that I may want to do going forward. And this professor of mine, Farzana Afridi, offered a job where I could go to Andhra Pradesh and do field work there. And that was really good for me, partly because my Telugu was not great. But once I went to the field, within 2 weeks, I think all this family background and stuff, Telugu just started coming out of me. Pata nahi kahan se aaya. And then I got to see villages in Andhra and Telangana, now Telangana, and all of that. And then at the end of 1 year working there, a friend of mine was working for the Poverty Action Lab, JPAL, जो अभिजीत बैनर्जी और एस्थर लुफ्लो का ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे. एंड शी कॉल मी अप एंड से, तुम थोड़ा आंध्रा में कर रहे हो नरेगा पे काम, और तुमको हमेशा से बिहार या यूपी या नॉर्थ में काम करने का मन था, डू यू वांट टू गो टू बिहार? मैंने कहा हाँ बढ़िया, मैं जाऊंगा. एंड that's basically how I ended up on a JPAL project in Bihar. And meeting Sanjay Sahini, as I documented the book, was complete chance. ऐसे नहीं था कि मैं मुजफ्फरपुर जाऊंगा. It was not never part of the plan. I never even knew what Muzaffarpur was until I got to Bihar. It was just that there was a bunch of activists in East Bihar who were holding this kind of meeting for activists from across the state. Sanjay happened to be there, and I just saw him, and then he told me कि भाई तुम लोग का, you should come to my village also. मैं भी करता हूँ काम, मैं भी ये सब करता हूँ. And that was the meeting, and that's how I ended up in Muzaffarpur. So that's the very short version of the story. क्विक क्वेश्चन शरण, आपका ये वैसे तो बाय द वे आपका रेज्यूमे तो मतलब इतना इम्प्रेसिव है, स्पेशली एट दिस एज. मतलब मेरे भी सपने थे हार्वर्ड जाने के, बट मैं अभी आई एम इन गुड़गांव डूइंग अ प्राइवेट जॉब, सो मेरे बदले का आपने पढ़ाई कर ली है. सो बट ऑन अ साइड नोट, आई शरण क्विक क्वेश्चन, साउथ के विलेज में आपने फील्ड वर्क करा एंड थोड़ा सा नॉर्थ और मतलब इस बेल्ट में, हिंदी बेल्ट में आपने करा. तो उनके गांव में, गांव क्षेत्र में, रूरल क्षेत्र में आपको क्या डिफरेंस दिखा? जमीन आसमान का फर्क है. इन द सेंस दैट जहां पे मैंने किया फील्ड वर्क, it was in coastal Karnataka, which is just north of Kerala. मतलब there, Dakshin Kannada is amongst the most developed parts of the country. The villages look beautiful. All middle class people will say बहुत साफ है, but I don't think it's about cleanliness. It's just that there are schools that work, the governments that work. I'll give you an example. 2010 में मैंने फील्ड वर्क किया कर्नाटका में, एंड उस टाइम पे ग्राम पंचायत ऑफिस had a computer operator with a desktop that was functioning और ये सब. अभी मैं संजय सानी का गांव जाऊंगा मुजफ्फरपुर में, वहां पे पंचायत भवन पे कंप्यूटर नहीं मिलेगा मुझे, राइट? सो ये 12 साल बाद. एंड संजय सानी's village is, of course, it's a normal village. It's not a particularly poor village or particularly rich village, but you can see that just the way the buildings are structured, just how the roads are, just the public goods, just the number of people, it's a big difference. And of course I'm comparing the best of the south with amongst the poorest states I mean the poorest state in the north. But even then, just in terms of just like thinking about those two experiences, they were very different, very different. और ऐसा क्यों है आपके हिसाब से? I think historical factors to matter करते ही है. मतलब a lot of these parts, especially in the south along the coast where I did my early field work, were always kind of reasonably prosperous. The villages were kind of structured in a way that it was easy to grow your crops in the rains. There was a lot of rain coming forward. It was natural resources. They were blessed. It was not super densely populated. In fact, one of my favorite books about the parts I grew up, it's called Dakshin Kannada, South Canada. It's written by a guy called Starak. He's an IAS officer, ICS officer, and the book was written in 1891. And it's brilliant. मुझे हार्वर्ड के एक लाइब्रेरी में मिला, I mean, very randomly. And he writes about the place being reasonably prosperous even 125 years ago. वाह. कि गांव गांव में लोगों के पास थोड़ा बहुत रिसोर्सेज है. उसको बहुत बड़ा दुख था इस बात की, यहाँ की जो गाय है, ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड. ये काउस बहुत पतले होते हैं, उनके दूध बहुत ये कंपेयर टू जो मैं देख रहा हूँ इंग्लैंड में जहां से भी आया वो, कंपेयर टू दैट यहाँ पे अच्छा नहीं है. बट ही इज लाइक गाँव का स्थिति ठीक है, मतलब लोग मतलब खाते, खाना पीना तो ठीक ठाक होता है. ऑफकोर्स लोन्स होते हैं, ऑफकोर्स लैंडलॉर्ड्स है, ये सब प्रॉब्लम्स थे. बट ओवरऑल एक पिक्चर जो था, इट वाज नॉट सो बैड.
compared to Bihar and those villages 125 years ago, things must have been. I haven't read enough historical material from that long ago in Bihar, but my guess is it would have been pretty bad even back then. So one is just like historical reasons, natural resources, population density, uh, and caste to some extent. Though again, in the areas that I did field work in Karnataka, caste was pretty flat. मतलब it was a Brahmin bastion, which continues to be a Brahmin bastion. तो वो तो है ही. But below the Brahmins, once you kind of go into the subcastes, they were pretty flat. The Bunts, the Shetties were basically a big caste, and they were pretty equal. ऐसे नहीं था कि there was a big hierarchy, at least from what I could tell back in the day. But in Bihar, it's always been much more, especially in the villages I did field work, एक वर्टिकल हायरार्की होता है कि तुम्हारा योर स्टैंडिंग इज दिस, ये लेवल पे है, आपके ऊपर ये चार लोग हैं, उनके ऊपर और 30 लोग हैं, एंड that kind of stratification of society is very detrimental to development. करेक्ट। और कास्ट रियलाइजेशन शरण कब हुआ आपका एज एन इंडिविजुअल? बहुत लेट हुआ, and that's basically tells you that I come from privilege. मुझे तो I don't remember when I was in school ever thinking about caste deeply at all. High school, nothing. Matlab, we used to engage with people from other castes, but we used to think of it as a poverty class kind of angle. कि ओ आई एम फ्रॉम दिस कास्ट सो आई एम डिफरेंट, ये सब तो आफ्टर आई वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी तब हुआ. एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इकोनॉमिक्स इज अ बिट मोर कंजर्वेटिव एज अ डिसिप्लिन देन अदर डिसिप्लिन. तो उसमें भी 1-2 साल लगा कि अच्छा ये होता है कास्ट, कि ये आदमी if he's dressing this way or if he has a genuine or not just genuine but even the way he talks, the way he behaves, this person is different because he's not from one of the lower castes. That only came kind of engaging in the with people in the hostel and in Delhi more broadly. So quite late, I would say. Not at all, very privileged existence in that sense. हाँ, एंड आपके हिसाब से हम लोग ऐसा क्यों फेस करते हैं, मतलब कि व्हाई डू वी हैव, एंड उसमें भी मतलब हम लोगों के पास ऑप्शन रहता है कि हम चाहे तो लर्न करें, नहीं करें तो नहीं करें, तो कोई हमें Hmm. हमें रियलाइज नहीं कराता है कि भाई तुम ये हो, या देयर आर नो फिंगर्स पॉइंटेड एट अस. इट्स फॉर यू एंड फॉर मी इट हैज बीन you know more like an option maybe that we choose to opt, कि यार हम ऑप्ट करते हैं टू नो दिस मोर. तो ऐसा क्यों होता है हम लोगों के साथ आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि इट्स बिकॉज द सोसाइटी इज गियर्ड फॉर पीपल लाइक अस. वी आर द पीपल हु मेक द रूल्स, वी आर द एलिट्स. तो हमको लगता है कि हम नॉर्मल है एंड रूल्स भी हमारे हिसाब से बने हुए हैं. तो हमको पता ही नहीं चलता है कि कोई दूसरा आदमी है जिसको मतलब जिसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, बिकॉज दे डोंट टॉक लाइक अस, दे डोंट ड्रेस लाइक अस, दे डोंट. And this is separate from the untouchable, this is the urban setting or like small town university setting, which is Manipal. It's not that the untouchability was explicit. Maybe there were separate classes for maids, and I think that was the case. I don't want to kind of say it for sure, but ऐसा कुछ हुआ होता. Definitely there was a different bathroom that maids used than the other people used, वो तो था. But at no point did we think of it as caste. We thought it was class, कि उनका अलग है, वो गरीब है, whatever. And this whole notion of purity and dirt, कि वो लोग but even that we never made the connection कि अच्छा हमको लगता था. In the amazing thing was, for example, on my father's side, the cook for a long time used to always be a Brahmin, right? And again, never questioned it. I used to go to summer holidays to my grandparents' house. The person cook used to be always called Iyer, and we used to, Iyer is cooking, blah blah blah. It never struck us ki, oh, Iyer is not just poor, but he's also our caste, so that's why he gets regarded a bit more respect than other people. We didn't know it. So I think it's just the way the rules are structured. It's just made in our favor so much that we think that's how the world works, and we don't even realize. करेक्ट। आप जब बिहार गए शरण, ये कौन सा मतलब ऑल्दो मैं ये भी बता दूं कि आपको भी और लिसनर्स को भी दैट हम बहुत सारी बुक की डिटेल्ड बात करेंगे, बट दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम रीडिंग द बुक फोक्स. सो यस, सो ऑल्दो यू हैव मेंशन्ड लॉट ऑफ दीस थिंग्स, बट हाँ, फॉर द सेक ऑफ आवर डिस्कशन, आप बिहार का वो व्हाट्स द ईयर, व्हेन डिड यू रीच बिहार? I reached Bihar in 2012 June, um, and that वाओ, was the 10 first years. time. 10 years, yeah. Actually, there was the first time I went to Bihar actually was even earlier. I used to have a paragraph in the introduction and I took it out. But basically, 2007 May,
मैं एक शादी के लिए गया था. So this cousin of mine is married to this economist Himanshu. My cousin Deepa Sinha is also an economist. Her husband Himanshu is a very good economist. He's at JNU. And he basically, his cousin Rinku was getting married, and Rinku and I and Himanshu had stayed together for a few months at Himanshu's place. So I knew Rinku well. Rinku ने बोला शादी है आ जाओ. Himanshu बोला मैं लेके जाऊंगा, चलो भोजपुर चलो. तो शादी के लिए गया था, and it was an amazingly different experience. Again, जो जिन शादियों में मैं गया था, it was this classic, South Indian, mostly Brahmin weddings. There's a particular style of everything happening. बिहार गया तो पहले तो एक सारे औरतों को बोला गया कि आप लोग नहीं आ सकते हो, only the men have to go. So all the men went as part of the barat. Then they made us wait outside the girls' village, and then they put up these tents, and this was a real culture shock for me कि पहले तो एक टेंट वेंट बने हुए हैं, and I'm just like wondering what's happening. It's like this old school का playground है, and हम बस बैठे हैं वेट कर रहे हैं. And then there are these men with rifles on their shoulders. They're standing on their side, and I'm just like ये क्या हो रहा है. And then there's a screen, and उस screen पे they start playing some movie, and I'm just like, why are we all watching the movie? क्या है ये? And it's this, Bhojpuri movie with this heroine who has these streaks of blonde in her hair, and she's behaving in this suggestive way. And then I suddenly realized, oh, this is like some soft porn I'm being shown. And I'm just shocked. I'm just like, यार यहाँ पे दादाजी है, यहाँ पे 16 साल का कोई लड़का है, हम सब आए हैं शादी के लिए. This is a scene have never seen in a wedding before in my life. Then Himanshu explains to me कि यार ये मुजरा का रिप्लेसमेंट है, पहले मुजरा होता था, अब बारात में ये सब होता है. तो अब ये सब उनको देख. मैं भी वंडर कर रहा था कि वो क्या होगा. What would Exactly. that be? And this is my exposure to Bihar. So the only other time I had been before 2012 was for this wedding, and everything is different. And then Bara mein gaya, Patna gaya. But I think it's about the age, right? When you're in your 20s, especially early to mid 20s, you are very accepting of many different experiences. At least we were. And everything is wonderful and wondrous and awe-inspiring. So even the first experience, but definitely when I first moved to Bihar in 2012, it was everything had this kind of different new feeling, which I really enjoyed. God. And how much time you took to finish this book? Because मैं पूरा timeline match कर रहा था, because क्योंकि book तो अभी तक चल ही रही थी. The stories went on till 2021, and Yeah, suddenly the book comes. What is yeah. this? How does this happen? So I wrote the book over a 10-month period. Lekin, a lot of the material in the book is not a lot. Some of the material in the book is actually based on field notes from the last 10 years. So what I would do was, and this goes back to what I was telling you earlier, कि पहले मुझे लगता था कि यार जो चीजें मैं देख रहा हूँ ये इतना different है और unique है. And I think I had that perspective a lot because I didn't come from a background where everybody else saw these experiences. काफी बार क्या होता है डेवलपमेंट सेक्टर में कि my father's an economist or my mother's social worker, my father's social worker, जो भी है, so everybody kind of comes from that world. तो उनके लिए ये नया चीज नहीं है. बट मुझे लगता था कि भाई साहब ये जो मैं देख रहा हूँ ये इतना अलग है that I have to document. So what I would do is I would write these emails for close friends and cousins based on my field experiences, written in the form of like almost like stories. So Sanjay ki bahut sare early experiences I've documented in the form of emails. And I just kind of used to put them together and just say, yeah, this is because if I were on the other side, I know I would enjoy it. So maybe let me send this out. So a lot of the book was actually written like that. So I would say about 30% of the book is just rehashed field notes, and baki 70% is new material. It's But still a 8 to lot, 10. यार. ये 10 महीने में you concluded a book, and हम लोग बात करें कि शायद एक साल में हम उसका अगर पिक्चर बनेगा तो उसका स्टोरी हम लिख पाएंगे. नहीं, it was amazing. मैं एक पोस्ट डॉक कर रहा था एक्चुअली. पैंडेमिक चल रहा था, पोस्ट डॉक कर रहा था. एंड पोस्ट डॉक में प्रॉब्लम ये था कि nobody can go to office. एंड इकोनॉमिक्स में पोस्ट डॉक का सबसे बढ़िया चीज ये है कि वो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है. स्पेशली इन द पोस्ट डॉक आई वाज डूइंग, इट वाज वेरी चिल्ड आउट कि तुम ऑफिस आओ, तुमको जो करना है करो. ऑफिस भी नहीं था तो जो करना है करो, घर पे ही बैठा था. तो मुझे लगा कि ये अच्छा मौका है, पैंडेमिक चल रहा है, लेट मी काइंड ऑफ कन्वर्ट इट. एंड आई हैड दिस, आई मीन व्हाट आई the only thing I'm very proud of about this book is मैंने एक sketch लिखा, आउटलाइन, कि चैप्टर में ये होगा एंड उसके अंदर ये चीजें होंगे. It was like a 2-page document, and I somehow stuck to it. Like I didn't change like I basically just that 2-pager was sufficient to serve as the foundation for the entire book with Very good. very little changes. So Very that was awesome. awesome.
That's actually very nice यार. If there are budding writers out there, I think this is very good first principle thinking कि भाई ये पांच चीज कर दो, उसी को fill करो. And tell me a little bit about the title here. So last amongst equals, just this part. Yeah. सो तो फ्रेज तो यही होता है फर्स्ट अमंग इक्वल्स यूजुअली कि यू नो हम सब एक है लेकिन हम में से जो लीडर है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ही इज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स दैट्स द यूजुअल वे वी थिंक अबाउट इट तो आई थॉट द वे टू फ्लिप इट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मेंबर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स टॉकिंग अबाउट वुमेन टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर वेरी पुअर ऑन द फेस ऑफ इट डेमोक्रेसी में सब इक्वल है On the face, बट yes. क्लियर हाँ ऑन द फेस ऑफ but Hmm. clearly and everyone one person one vote all of this kind of again on the surface it's all like oh sab log ek hi hai everybody has the same power in their vote blah blah but actually तुम आप खोल के देखोगे तो of course there are people who are much less equal than others and so that was where the idea comes from this book is about people who are the last among equals both outside of government and because I spent talking about ward members in government मुझे लगा ward members भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो है ही मेरे लिए भी पर वो शौक लोग भी था वो. लास्ट है हाँ, हाँ मेरे हाँ, लिए भी शौक था वो कि पर वो क्या लोग चल भी रहा है यार. लास्ट है हाँ वो तो तो मतलब. हाँ, and I think we will talk about कि how is the politics structured at a village level. But एक बार बताओ शरण, इस बुक का रिस्पॉन्स कैसा रहा स्पेसिफिकली फ्रॉम द प्रिविलेज सर्कल ऑफ योर्स? So I think एक चीज जो है a lot of like friends and family who've read it like let me kind of categorize it into say people who are say in their 50s 60s 70s who have kind of read the book now at this age. I think it's been nice because some my parents were the early readers of this book and my idea was always that you know I should reach out to populations who don't think like us who don't have the experiences that we do and I think there's a bit of movement on how they think about you know poverty inequality government caste in particular so all of these things I think people are a bit more empathetic. I think the fact that you know the book humanizes a lot of these people and gives you names and gives you descriptions of how they are what they think like that makes it easier for people to kind of associate things with issues. So when you're talking about the largest structural issues with caste पहले आप कहानी सुनाओ बोलो कि ये कहानी है ये आदमी है इसके साथ ये हो रहा है and then you kind of zoom out and say कि ये इस वजह से है क्योंकि caste ऐसे होता है as opposed to only writing some larger theoretical treatise on caste that makes it very easy for people to hold on to and that's what I think it's been very heartening about the response कि बहुत लोग are able to see the larger structural issues through the lens of the individual stories and it would be much harder to convince these people to move in the progressive direction without the stories so that's why the stories I think are important but below that, I would say if you take away the older people or whatever the people who are more privileged, the privileged amongst the youth or college going, I think people, you know, the response has been good. People seem to like the book. Some people are moved. Some people feel like one reviewer. You know, you always remember the bad reviews. I think I got one bad review, and that reviewer was just like, इतने सारे कहानियां सुना लिया इसने इससे बेहतर था कि वो he should have spent time talking about the actual substance of government or ये सब. So there's always a trade-off, especially I think people in our circles who are privileged and who have seen these things, they're just like, this is a storybook. So yeah, that's kind of broadly the response. गॉट इट. जब आप बिहार गए तो आपका खुद एक स्टीरियोटाइप लेके गए होंगे. Hmm. वो स्टीरियोटाइप कितना मतलब सही रहा और कितना शैटर हुआ, कुछ उस बारे में बता सकते हो आप? So to be honest, मैं इतना बड़ा stereotype नहीं लेके गया. Partly because you know I had met enough Biharis in my hostel. I had hung out with Himanshu and other people to know that ये पूरा गुंडा राज जंगल राज you know सब लोग गन टोटिंग भाग रहे हैं लालू यादव के डाके डाके ये सब तो मुझे पता था कि ये ऐसे नहीं होने वाला है वहां जाके तो सब नॉर्मली हो गए और you know, सब ठीक ठाक ही चलेगा so वो तो था ही so that I didn't carry and the second thing I think was that I had already done some field work in some villages like I told you they were very different villages but you had a broad sense especially Andhra में जब किया तो the caste was more apparent the land problems were more apparent so you had a sense कि ठीक है ये सब चीजें होते हैं गांव में so it was not so wildly different. I think the one thing that kind of completely blew me away was the warmth. पटना में मतलब लोगों से बात करो तो लोगों के पास टाइम स्पेशली तब आई डोंट नो अब थोड़ा कम हो गया शायद डेवलपमेंट के साथ ये सब होता है बट तब
आप सब्जी खरीद रहे हो तो सब्जी वाले से बात करो, तो वो भी आराम से बात करते पूछते, अरे क्या चल रहा है भैया, बताइए क्या हो रहा है आजकल, एंड देन वी काइंड ऑफ हैव अ कॉन्वर्सेशन, देन ही आस्क यू, ही से कि आज आपके लिए टमाटर बचा के रखा हूं मैं, कि ये वाला आपको अच्छा लगता है, यू नो, दिस those smaller conversations you have, you shake hands with someone, it lasts for a bit longer because there was a kind of natural warmth. Of course I recognize now especially that some of it is privilege, that you know I am the outsider, the English speaking whatever, these guys आर लाइक, ओ इससे तो अच्छे से बात करना चाहिए, बट गांव में भी जाओ और मजदूर से बात करो तब भी वो लोग, यू नो, द वे दे वुड टॉक टू यू, द फेमिलियरिटी, द फॉन्डनेस, दैट रियली स्टक. लाइक मुझे लगा कि, एंड आई हैव दिस hypothesis, and of course it's self evident to some. I think there is something about development, and something about getting more money and incomes that kind of changes the nature of interpersonal relations. कि at a lower stage of development, there's much more community feeling. People are more Yeah. happy. There's more time in some sense, and that kind of goes away with development. So that was the thing that really struck me when I. गॉट इट. तो आप बिहार और जनरली एक विलेज को अगर मैं आपको पूछूं शरण कि आप कैसे डिफाइन करना चाहोगे, तो फॉर स्पेशली फॉर द अनइनिशिएटेड, सो हाउ विल यू डिफाइन टिपिकल विलेज इन बिहार, एंड यू नो आप यू आर फ्री टू डिफाइन इट द वे यू वांट. Yeah, I think it's a good question actually. I think the fundamental thing that strikes you about village and anywhere in the country, but especially in Bihar also, is the fact that every tola is separated from another tola by caste. I think टोला मीन्स that's मतलब the इज इट लाइक अ कॉलोनी? इट्स लाइक अ हैमलेट कॉलोनी टाइप ले लो. मतलब अगर बिहार में एक पंचायत में से 2000 to 2500 हाउसेस है, maybe there'll be 8 to 10 tolas. तो 10 टोले में each tola will have 2-3 जातिस living together, but वो जाति का घर भी will be separated. मतलब ऐसे कि 10 आपको राम जाति का लोग होंगे, फिर उसके बाद 10 माझी का होगा, ऐसे होगा. It will always, everybody, despite their being, they all live, it's super densely populated. That's the second big fact about villages, especially in Bihar. There are people everywhere. Of course, there are Khet and fields, and you know all the Yash Chopra, Punjab, Bollywood images also are true. But it's also true that there are many more people, and they all live together, but they all live geographically by caste. And it's a thing that strikes you almost immediately. कि अच्छा ये सानी टोला है, तो यहाँ पे सानी लोग रहते हैं, एंड सबको पता होता है कि ये, हाँ इक्के दुक्के घर होंगे जो किसी और कास्ट के होंगे, बट ज्यादातर there's a caste based segregation that happens, and it's remarkable how consistent that is. This was true even when I did fieldwork in Karnataka, but I wasn't as aware of say jati when I was doing fieldwork there. I knew कि दलित टोला ये है, एंड एवरीबडी लिव्ड अवे फ्रॉम दैट. बिहार में अभी भी ये होता है कि गांव के एक एंड पे होंगे दलित के सारे, एक टोला होता है थोड़ा अवे फ्रॉम द विलेज, अवे फ्रॉम द मेन सेंटर ऑफ एक्टिविटीज, एंड वहां पे लोग रहते हैं, एंड इट्स सो ऑब्वियस. एंड दैट इज अ थिंग that I think is remarkable. The second thing that kind of strikes you, and this is true of any city also, but I guess cities are more geographically spread, so sometimes the inequality doesn't hit you so obviously. कि एक दलित टोला के बाद अगर एक भूमिहार का टोला होगा, तो घर में बहुत फर्क दिखेगा. घर का स्टाइल, घर में जितना आंगन का स्पेस है, पेड़ है, बगीचा है, मतलब यू जस्ट सडनली रियलाइज यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑलमोस्ट विद इन द सेम 1 kilometer रेडियस. सो इट्स काइंड ऑफ अमेजिंग, you know, that inequality I think really hits you when you गॉट enter इट. a village. एंड यहाँ पे ज्यादातर ऑक्यूपेशंस क्या देखने को मिलते हैं आपको अक्रॉस, एंड बिफोर दैट क्या पंचायत जो होती है उसमें वो भी क्या होमोजीनियस होती है? Nahi, in the sense that if you think of the panchayat, a panchayat has 2000 households and they are usually multiple castes, so they're not fully homogeneous. But each panchayat actually is also often an artifact of government policy. कि गांव पहले होता था, at some point in 92 or something they said कि a collection of 2000 households, actually उस टाइम पे 1000 households तक कुछ था, becomes a panchayat. So they said कि ये 1000 घर का एक कलेक्शन बना के एक पंचायत बना सकते हैं हम, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होगा, उस पे एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसका वार्ड्स होंगे, ये सब उन्होंने तब तय किया. बट उससे पहले ये जो बाउंड्रीज है, एंड दिस आई थिंक गोस टू द सुचित्रा विजयन कॉन्वर्सेशन यू आर हैविंग एट अ मच लार्जर स्केल एट द, यू नो, इन योर पॉडकास्ट, बट even within the पंचायत the boundaries are quite porous. काफी बार ये होता है कि एक गांव को काटा गया है और एक आधा एक पंचायत में आता है, दूसरा दूसरा पंचायत में आता है.
So it is homogeneous. It's not really homogeneous. It is almost an artificial construct to some extent. But each tola, each village has its own different identity. I think village gaon is the better, better marker of geographical location than a panchayat. करेक्ट। और इसमें इनका इकोनॉमी कैसे चलता है, तो थोड़ा इकोनॉमिक्स अगर आप बताओ तो So लोग। yeah, so most of the it's still agriculture based economy. I'll focus on the panchayats that the book is based in. A lot of it is still very much, you have these landlords who own land. A lot of the land now is especially being done by sharecropping. Many of the landlords are absentee. They don't live in the panchayat anymore. वो कहीं बाहर रहते हैं. उन्होंने अपना जमीन को दे दिया है किसी को, बोला कि आप शेयर क्रॉपिंग करो, एंड they are the middle peasants. They do the sharecropping, but they hire mazdoor. They hire these casual laborers to come and work there. तो वो तो होता है. There are traditional occupations in every पंचायत. तो कुम्हार होते हैं, जो पॉटर्स होते हैं, जो वाटरमैन होते हैं, पानी वाले कुछ लोग होते हैं. मतलब there are all these other occupations by caste. They are slowly breaking down. पहले होता था कि चमार जो होते हैं वो they work with leather, potters, kumbhars work with pots. You had these kind of very occupation based categories of people. वो सब थोड़ा break होने लगा है, which basically means that a lot of it continues to be on agriculture. There is some local production of some things, but not really. And there is kind of inequality because basically your main source of income, if you stay in the village, your main source of income is on working on these agricultural lands where the landlords continue to have pretty big say on how much wages you get, how much money you're paid, how much food you get, and stuff like that. Now, the final thing I'll say here is a lot of villages in these parts are characterized by households where husbands don't live at home. They all live in Punjab, Kerala, Karnataka, जाके वहां जाके काम करते हैं. तो घर पे महिला होते हैं, बच्चे होते हैं, और हस्बैंड आते जाते रहते और हैं. वहां पे जब वो जाते हैं तो किस टाइप के जॉब्स करते हैं टिपिकली, जो आपने देखा आपके पंचायत में? Typically, you're either so a lot of people go as say security guards. That's one thing that in this panchayat especially quite a few went as security guard, but a lot of it also shop construction ka kaam. Say that's the lowest I would say. You start as a construction worker and you get paid much more in the cities, and there's a lot more construction work in the cities, so you kind of do that. And then you also do this कंस्ट्रक्शन के अंदर ही मिस्त्री का काम होता है, बिजली का काम कर सकते हो आप, जो संजय सानी कर रहे थे. तो ये सब शॉप हैंड्स हो सकते हो आप, मतलब शॉप्स में जाके यू आर द बॉय, और द फार्मास्यूटिकल स्टोर में जो एक्स्ट्रा बंदा होता है, ये सब चीजें. सम पीपल गो एज हाउस हेल्प्स. तो ये सारे ऑक्यूपेशंस होते हैं. दे ऑल गो, दे डू दिस काइंड ऑफ वर्क, एंड देन they send money back or they come back once every 6 months. That's how it works. विच मीन्स कि जो वुमेन्स होती हैं, विमेन होती है जो हाउस होल्ड की, वो उनको बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करना पड़ता होगा बिकॉज मेन इज नॉट देयर, एंड प्रोबेबली शायद उनको डे टू डे ऑपरेशनली वही चलाना है, बच्चों को बड़ा करना है, घर की देखभाली करनी है, कुछ खराब हो गया थोड़ा सा वो उस पॉइंट पे आप टच करना चाहोगे? So actually, this is something that I think is ripe for good research. There's one student at the University of Pennsylvania, Ritika Kumar, who's doing some work on it, which is basically this. She calls it a dynamic household structure. Usually, a household structure fixed होता है. इनके केस में जी dynamic होता है क्योंकि husband नहीं है. वो चलते हाँ रहते आते रहे चलते रहे. So then, what happens to women's political participation, women's participation in villages? And she's arguing that things like this improve. Women actually now are able to go to temples by themselves, kirana store, पंचायत मीटिंग, ग्राम सभा. मतलब ग्राम सभा पंचायत मीटिंग इतने लोग नहीं जाते हैं, बट जो जाते हैं महिला ही जाते हैं ज्यादातर. एंड so their mobility is kind of definitely affected in a positive way, actually, surprisingly, because they have to do all these extra things that otherwise traditionally the husband would do. But the other thing I will say is that, and this is an insight that has struck me working across a range of contexts, actually lower caste women, Dalit, EBC women are often much more socially mobile than members of higher castes. तो अगर आप मतलब आई रिमेम्बर दिस, आंध्रा में एक रेड्डी हाउस होल्ड पड़ा लैंडलॉर्ड के घर. आई टॉक अबाउट इट वेरी ब्रीफली आई थिंक इन द बुक, बट एक लैंडलॉर्ड के घर गया था. his wife was a सरपंच. He didn't even let her come out. He was like, नहीं, वो तो बाहर नहीं आएगी, मैं ही बात करूंगा. That is true even if you go to an upper caste, general caste household in Bihar. Often, even like backward, sometimes the other women don't come out, and then you talk to the husband. But you will find a scheduled tribe Khamma woman in Andhra who will basically be the person running the panchayat. Similarly, in Bihar,
आप the women I talk about in this book, they're often like, they're aware, they're political, they come out of the household, they're talking to you. Ghungat often is not as strongly practiced as it is in the upper caste, so parda, whatever. So there's a lot of like this that you see, which is very strange, that the Sanskritization actually means women become more sequestered in their homes. Um, yeah, and so that's something you see. करेक्ट। नहीं, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि मेरे को याद नहीं मैं किनके साथ मैंने ये डिस्कशन करा था। और बेसिकली जो हमारा हाइपोथेसिस था उस पॉडकास्ट में और जो निकल रहा था कि जैसे जैसे आप ब्राह्मण से दूर होते जाते हो कास्ट में, जो रूल्स रहते हैं ऑफ हार्डकोर हिंदुइज्म वो डाइल्यूट होते जाते हैं, और इतने स्ट्रिक्टली आप उस उन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण हाउस होल्ड, लाइक यू सेड कि ना एक राजपूत शायद ज्यादा घूंघट पहनेगा, के यहाँ स्ट्रिक्टनेस ज्यादा रहेगी। सिमिलरली शायद हो सकता है सुपरस्टिशंस उनके यहाँ पे फार मोर हो, डिस्पाइट ऑफ द एजुकेशन इनके यहाँ के सुपरस्टिशन शायद इतने ना हो। सो दिस इज समथिंग आई थिंक यू ऑल्सो वैलिडेट दिस हाइपोथेसिस वेरी वेल। Completely true. और थोड़ा सा आप ये अब कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकली कैसे स्ट्रक्चर्ड होता है गाँव? बिकॉज पीपल जस्ट नो कि पंचायत होती है, पंचायत में इलेक्शन होता है, इलेक्ट करो ये करो, बट थोड़ा सा उसको जूम बॉटम अप आप उसको समझाओगे थोड़ा? So I think let's start. So there are two separate types of politics, and often they don't even interact. One is MLA MP wala us level ka politics. The other करेक्ट। is panchayat level politics. And the MLA MP style politics is often party run. Parties होते हैं, local political workers होते हैं उस पार्टी के, जो activate होते हैं around the time of elections. Only BJP, and that also in some pockets in Bihar, has a structure where the party workers are active even when there's no election. क्योंकि उनके पास इतना resources है, they're able to do some of the party का काम even otherwise. But for most of the other parties, including RJD, JDU, and the left, the activation only happens around the time of elections. तो ये एक चीज है. बट वो पॉलिटिकल वर्कर सबको पता होता है कि ये जदयू का आदमी है, ये राजद का आदमी है, ये सब तो लोगों को पता होता है कि ये होते हैं. So that's point number one. And these brokers are off, and they also kind of double up as brokers during non-election times, where कि आपको कोई घर चाहिए, इंदिरा आवास योजना के अंदर आपको 40,000 रुपए मिलना है, आपका एप्लीकेशन इज नॉट बीइंग सबमिटेड बाय द ब्लॉक ऑफिस. तो ये आदमी आके बोलेगा, अरे यार मैं किसको जानता हूँ वहां पे, चलो मेरे साथ. फिर वो 2 साल बाद आके बोलेगा कि देखो आपका घर मैंने दिलवाया, तो आप प्लीज मुझे वोट करो, ये ले लो 500 रुपए, जाके वोट करो आप. तो ये एक MLA MP स्टाइल इलेक्शन में ये काफी बार होता है. एंड it is also true at the same time that every party has its set of core voters. अगर यादव होंगे तो ज्यादातर यादव लोग RJD को वोट करेंगे. There's a very small JDU base which constantly votes for JDU, which is the Kurmi, खुरमी का। Sami, Kurmi caste के लोग, Kurmi थोड़ा कोयरी लोग भी वोट करते हैं. But beyond that, people's kind of voting is kind of flexible. BJP का of course अपना base होता है. So beyond that is kind of flexible, but that's basically what the political structure in terms of how people vote. Now that is the MLA MP. फिर एक होता है पंचायत. पंचायत में गेम ही अलग है. पंचायत में पार्टीज नहीं होते हैं ज्यादातर, एंड पंचायत काफी डेमोक्रेटिक होता है इन द सेंस कि काफी बार जो लोग आपको लगता है कि पॉलिटिकली एक्टिव ना हो वो भी जीत सकते हैं. या जस्ट जो कोई अच्छा सोशल वर्कर हो जिसका नाम थोड़ा बहुत है कि अच्छा काम करता है, कभी कभी वो भी जीत जीत मच दे आर मच लाइकलियर टू विन एट द पंचायत लेवल देन एट द हायर लेवल्स. एक रीजन तो ऑब्वियस है, पहले तो आपका काम दिखता है, आप काम करते हो, तो मेरे सब लोग जानते हैं कि आप संजय साहनी हो फॉर एग्जाम्पल, आपने काम किया इस पंचायत में, इतने लोगों का मदद किया, चलो आपको वोट देना चाहिए. अब कितने लोग MLA को जानते हैं? बहुत कम लोग. कितने लोग MP को पर्सनली जानते हैं? और भी कम लोग. सो ये पंचायत का जो स्पेस होता है वो बहुत डेमोक्रेटिक है उस सेंस में कि सब अपने लीडर को जानते हैं, उनको मतलब एटलीस्ट नाम तो पता होता है कि कौन है ये, क्या काम किया है, कहाँ से आते हैं, ये सब चीजें, किस टोले से आते हैं, उनके रिश्तेदार कौन है. सो दैट इज वन. The second thing about panchayat is because there are no parties, the money is much lower, so it makes it easier for people to contest. The third thing is that is one level. पंचायत का हेड होता है मुखिया, बिहार में is called मुखिया, he or she, and that is one level. उसके नीचे वार्ड होते हैं, which I talk about in the book a lot. वार्ड्स में बेसिकली एक पंचायत में 13 वार्ड्स होते हैं, 13 ऑन एवरेज. ईच वार्ड हैज 200 हाउसहोल्ड्स. अब ये 200 घर, बिहार जितना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में 200 घर इज बेसिकली 3 स्ट्रीट्स. आप 3 लाइन ले लो, घर ले लो, 200 घर आ जाते हैं उसमें. ऐसे होता है बाहर के गाँव. तो अब ये 3 स्ट्रीट्स का एक लीडर होता है जो सब लोग जानते हैं उसको. मतलब दे विल नो दैट पर्सन फ्रॉम चाइल्डहुड कि इफ इट्स अ वुमन प्रॉब्ली आफ्टर मैरिज, इफ इट्स अ मैन फ्रॉम चाइल्डहुड, दे नो कि ये बंदा ऐसा है, ये बचपन में ऐसे कर रहा था, ये सब चीजें. सो बहुत ही लोकल लीडर होता है.
एंड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नेंस इन बिहार राइट now, उनके पास काफी कम पावर्स होते हैं। तो बट वार्ड का ये फायदा है कि अगर आप थोड़ा कोशिश करें तो वेरी लाइकली दैट यू कैन एक्चुअली विन दोज इलेक्शंस, स्पेशली अंटिल 2016 जब वार्ड्स के पास कोई फाइनेंशियल पावर्स नहीं था, तो कोई भी खड़ा हो सकता था, कोई भी जीत सकता था, एंड दैट वाज अ स्ट्रक्चर। सो दिस इज द पंचायत panchayat level political structure, which is kind of different from MLA and करेक्ट। हमने बहुत अच्छा ग्राउंड सेट कर दिया है फॉर लिसनर्स आई थिंक नाउ, बिकॉज नाउ दे विल आई थिंक रियली रियली अप्रिशिएट द स्टोरी दैट इज कमिंग देयर वे। तो आप जाते हैं, आप मुजफ्फरपुर जाते हैं, आप किस एजेंडा से जाते हो और आप कितने साल का सोच के जाते हैं कि मैं इतने साल रहूंगा वहां पे, एंड व्हाट ऑब्वियसली यू एंडेड अप आई थिंक मेनी 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 इयर्स। तो वो भी मैं बड़ा सरप्राइज था कि आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, फिर रुक रहे हैं बहुत टाइम, तो थोड़ा वो बताओ। तो बेसिकली मैं जब पहली बार गया मुजफ्फरपुर, बिकॉज संजय सानी ने बेसिकली जिद करके बोला कि आप लोगों को आना चाहिए। मेरी एक दोस्त है आनंदिता अधिकारी, ओनी है, हम सब ओनी उसको बुलाते हैं। शी एंड आई वर द फर्स्ट पीपल टू गो एंड शो अप एट संजय's विलेज, एंड संजय वाज जस्ट लाइक मैं भी नरेगा का काम करता हूँ ये सब, सो ठीक है चलो, वी सेड वी कॉट अ ट्रेन, वी शोड अप एट हिज विलेज, एंड देन देयर वाज अ मीटिंग। ही सेड अगला दिन सुबह 11 बजे मीटिंग है, चलो मीटिंग पे सब लोग। सो हम रात को सोए, सुबह 11 बजे हम गए मीटिंग का। एक पुराना सा एक महंत इसका महंत मरियारी पंचायत है, जहाँ पे महंत का एक पुराना घर है, लाइक मंदिर टाइप घर। तो वहां उसके सामने थोड़ा ओपन एरिया है, तो वहां पे मीटिंग था। तो हम गए, तो 11 बजे, तो ये अर्ली डेज इन बिहार मेरे लिए भी, तो मुझे तभी तक समझ नहीं आया कि टाइम बहुत फ्लूइड कॉन्सेप्ट होता है, कि ऐसे नहीं है कि मतलब बहुत टाइम है। टाइम तो मतलब सबका अपना अपना टाइम होता है, and किसी को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दिस वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट टू मी। तो मैं पहुंच गया 11 बजे। फिर 11:15 तक संजय जी को बोला बस हो गया, यहाँ पे 50-60 लोग हैं, महिला है, मर्द आए, मतलब सब लोग बैठे हैं, चलो मीटिंग शुरू करते हैं। तो संजय जी बोले नहीं नहीं, अभी अभी तो टाइम ही नहीं हुआ मीटिंग का, अभी तो लोग आ रहे हैं। तो मैंने कहा कितने लोग आएंगे, और संजय जी तो बोले कि देखो वहां से आ रहे हैं। एंड लिटरली एक फील्ड था, और वो फील्ड के आगे से ऐसे एक लाइन पे लोग आने लगे, आई मीन आ रहे थे उस टाइम पे, एंड दे केप्ट कमिंग एंड कमिंग एंड कमिंग, and suddenly you see this massive crowd of people by 11:30, 11:45. It's huge. And Sanjay Sahini is there, and he's talking to them, and he says कि चलो आप लोग सब आए हो, देखो पटना से ये लोग आए हैं, आप आपसे बात करने के लिए, हम सब नरेगा पे बात You करेंगे। became celebrity that time, is it? इमीडिएटली मतलब डे वन पे ही, मतलब लाइक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, एवरीबॉडी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, एंड पटना से आए हैं ये लोग। एंड ऑनी उस टाइम पे शी वाज कंसल्टिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, तो ये सरकार का बिहार के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ काम करती है, ये कोई रिसर्च करते हैं सरन जी। तो ये शुरू हो गया ये पूरा एक स्टोरी। संजय देन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट नरेगा, एंड उस टाइम पे कुछ नया फंड फंड फ्लो मैकेनिज्म चल रहा था, व्हिच वाज व्हाट वी वर वर्किंग ऑन, सो वी एक्सप्लेन दैट टू देम। एंड मुझे लगा कि गांव के मजदूर कितना समझ आएगा कि पैसे कहाँ से आता है, किसका अकाउंट से जाएगा। दे न्यू एवरीथिंग, they knew what NREGA was, they knew the rules, they knew कितना मजदूरी कितना मिलना चाहिए, they knew how to file application, and we were shocked because तब तक हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहार ये था कि बहुत कम लोग जानते हैं नरेगा क्या है, कैसे करना होता है। मुखिया जी आते हैं, बोलते हैं चलो भाई वहां पे काम है, काम करो, तो ये लोग जाके करते थे। बट दिस वाज द ऑपोजिट, यहाँ पे तो सब लोग गवर्नमेंट स्कीम को जानते हैं, एंड नरेगा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम, बट इवन देन एवरीबडी नोज द इंट्रिकेसीज एवरीथिंग, एंड वी वर जस्ट astounded. And that was my first meeting with the Mazdoors of Muzaffarpur, who are affiliated with the people's movement there. And that, I think, was the big reason why I knew I had to go back. Because जो मैंने उस टाइम देखा, मैंने कहीं नहीं देखा उससे पहले. And I wasn't a politically crazily active person in Delhi University. I kind of submitted the application to be vice president and withdrew the nomination within a few weeks of my college. क्योंकि कोई फाइट हो गया था, और मैं डर के बेड के नीचे I सो रहा was about to say था। कि ये पड़ गया था क्या? हाँ, हाँ, so उसके बाद I have not been a, so then to see the power of politics, to see the power of people's mobilization was, and it was kind of so stark and so obvious that here was a man and a people who had come together to try and achieve something for themselves. It was so obvious that I knew I had to go back. And so that after that first meeting, I kept going back to the same panchayats. And I think that's the other big advantage. I think again all by chance. मैंने ऐसे planning नहीं करके बोला कि मैं अब हर महीना जाऊंगा या कुछ. But
every meeting would result in another one कि अरे यार ये मैंने देखा नहीं है, ये मैंने सीखा नहीं है, इनसे मिलना है, इनको ये दिलवाना है, ये देना है, या इनसे बात करना है, ये सब समझाना है और समझना है, whatever. And so I kept going back. What it does is it creates a continuity in your understanding. एक ही जगह को आप बार बार जाएंगे तो आपको पूरा उस एरिया का पूरा समझ आएगा, विच इज अ वेरी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग देन मोस्ट पीपल हु डू फील्ड वर्क इन इकोनॉमिक्स. एटलीस्ट वो अलग अलग गांव पे जाएंगे, उसका भी एडवांटेज है. बट इसका स्पेसिफिक एडवांटेज ये है कि आप फाइनली यू सी द चेंज, यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे चेंज होता है. ऑफकोर्स ये एक कहानी है, बट एटलीस्ट वो एक कहानी को आप बहुत डीपली समझ सकते हैं. दैट्स समथिंग दैट आई गॉट फ्रॉम. बिल्कुल। और हम अक्सर देख सुनते भी हैं ये कि जब पीएचडी की बात होती है तो बोला जाता था कि या तो आप पीएचडी करो तो एक बड़ा डेटा सेट पर करो कि स्टेट के इलेक्टोरल मूवमेंट्स, या तो वो करो, या तो इतना छोटा आप वो पकड़ो कि एक किसी का हाउस होल्ड ले लो या कोई गांव ले लो, वहां जाके करो. सो आई थिंक या तो आपने कहा यू वैलिडेट इट. सो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था संजय सैनी के ऊपर एंड संजय जी के ऊपर? संजय जी, सो जब मैं पहले मिला था संजय जी से, तो मुझे लगा कि I write about this in the book. He didn't make much of an impression. He was some guy, who was just sitting in the back, या quiet. अच्छा ठीक है. Of course, there was something about him that was different, but nothing that suggested to me कि ये आदमी जो ऐसे चुपचाप बैठ के बस सुनते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है खास. This man can transform into this kind of people's mobilizer once he has his kind of setting. The contrast was stark. And when he told us his story कि मैं एक्चुअली इलेक्ट्रिशियन था दिल्ली में, मैं एक्चुअली ये सब आई वाज नॉट इवन इन दिस वर्ल्ड, मैं कोई और जिंदगी जी रहा था और बहुत आराम जिंदगी थी वो. एंड मैं उस जिंदगी को छोड़ के, मैं दिल्ली का सब कुछ छोड़ के वापस गांव आके मैं करप्शन के खिलाफ लड़ रहा हूँ. व्हेन ही सेड दैट, इवन व्हेन ही टोल्ड द स्टोरी, आई डिड नॉट सेंस दैट आई विल सी संजय सानी, द एक्टिविस्ट, द मोबिलाइजर, द इंस्पिरेशनल टॉकर, in the way I saw him. So that was my first impression. Ki, oh, quiet guy, okay, interesting person maybe, but I don't really know what to make of it. उनका स्टोरी पे थोड़ा बताओ ना, उनकी स्टोरी कैसे शुरू होती है इन दैट साइबर कैफे इन दिल्ली? So yeah, it's a story I never tire of telling because it's such a fun story. So this man was basically an electrician in a cyber cafe. Electrician on the streets of Delhi. उनका एक खोखा होता था जनकपुरी में. एंड उस खोखे में वो अपना काम करते थे. तो रोज ही यूज्ड टू सी कि ये साइबर कैफे है, उनके खोखे के बगल में एक सरदार जी उसको चलाते थे. एंड पीपल वुड एंटर द साइबर कैफे, go do something on the computer and then come out, and he would keep looking at it and seeing कि कुछ कुछ कर रहे हैं ये लोग. So once again by chance he said कि चलो मैं भी देखता हूँ क्या करना है. So he found one open कि किसी कोई आदमी छोड़ के गया था तो वो चले गए वहां पे. And here you can see the class angle also coming in. सरदार जी उनको देख के बोले कि आपके लिए नहीं है ये सब चीज, आप प्लीज चलिए. तो बोले नहीं नहीं, हमको बस देखना है, हमको बस देखना है. So then the सरदार जी से ठीक है चलो देखो जो करना है करो. And Sanjay somehow thought knew this कि एक चीज होता है गूगल का एक गोल चक्कर होता है. मैं गोल चक्कर को क्लिक करूं तो मुझे एक जमाना, मतलब आई सी अ होल वर्ल्ड इनसाइड दैट गोल चक्कर. तो मुझे अब उसको देखना है कि क्या है वो गोल चक्कर. तो ऐसे से कुछ क्लिक किए तो अचानक गूगल पॉप हो गया. तो गूगल सर्च बॉक्स में जब वो देखे तो वो सोचे कि क्या टाइप करूं. तो उनके दिमाग में बहुत कंप्लीट चांस, उनके दिमाग में एक कॉन्वर्जेशन आया कि लोग अपने गांव में बात कर रहे थे, कोई गवर्नमेंट स्कीम है नरेगा, और नरेगा में उन्होंने काम किया और उनको कोई वेजेस नहीं मिले. सो ही थॉट कंप्यूटर के सामने बैठा हूं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहिए, व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट देन नो वेजेस, सो लेट मी आस्क. सो ही टाइप बिहार नरेगा. तो बिहार नरेगा टाइप किया तो he ended up on the NREGA website. The NREGA, just to kind of give a very quick short summary, is a government act introduced by the Congress government in 2004, 5, 6, where the basic principle is the following. If you're a mazdoor in a village, or if you're anybody in a village, forget a mazdoor, anybody in a village, you do not have work, you can go up to your local elected representative, the Mukhiya of your panchayat, and say, भाई मुझे काम चाहिए, आप प्लीज काम दे दो. That is the fundamental principle, that you can get work on demand. And you can get how much work? Up to 100 days for the full family. What is the thinking? The thinking is agriculture is seasonal. Between the seasons, between the harvest period and the sowing period and the next harvest, there are gaps.
उस गैप्स में काम नहीं मिलता है लोगों को, जो जो गांव में ही रहते हैं, जो दूसरे दूसरे शहर में नहीं जाते, जो गांव में ही रहते हैं, उनको काम नहीं मिलता है। सो द आइडिया इज वेरी सिंपल कि आप प्लीज बैठ के अपना मुखिया से जाके बोलो, मुखिया इज सपोज टू अंडर द एनआरईजीए, ही हैज फंड्स, ही और शी हैज फंड्स, दे कैन एलोकेट सम वर्क दैट विल इम्प्रूव द विलेज, जैसे रोड बनाना होता है, पेड़ पौधों को लगाना होता है, या कुछ भी, वेल कंस्ट्रक्शन, नाला को साफ करना होता है, कुछ भी करो आप, आपको काम मिल जाएगा। दैट इज द आइडिया। Now the problem is that in the early years of NREGA, especially, the Mukhyas actually never gave out any work. They wrote on paper कि ये रोड बन गया है, इतने लोगों ने काम किया है, सबका पैसा उन्होंने ले लिया। They told the government that we, 80 लोगों ने काम किया, 20-20 दिन काम किए, इतना wages मिला, सब names are all real, but none of them have worked. And the Mukhya has happily taken away money in those people's names. So when Sanjay Sahini shows up on the NREGA website and he navigates to Muzaffarpur, to Ratnauli, his panchayat, suddenly he sees all these names. The names are, Mahendra Paswan. He still remembers the first name. It was Mahendra Paswan. And he's like, oh, Mahendra Paswan जी तो घर के पास ही रहते हैं, इनका नाम क्यों है यहाँ पे? लिखा गया कि इन्होंने बहुत काम किया है स्कीम में और बहुत पैसे कमाया है. So he is just like, oh my God, कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सब मेरे गांव के लोग हैं एंड मुझे नहीं लगता कि इन्होंने इतना काम किया और इतने पैसे कमाए. तो पूरा प्रिंट आउट लेके भागते गांव और एक भोपू लाउड स्पीकर लेके घूमते रहते हैं, लोगों से पूछते रहते हैं कि आइए आइए, आपका नाम इस पे लिखा है तो कि आपने प्रिंट आउट की भी बड़ी फनी स्टोरी है कि वो प्रिंट आउट हाँ. मतलब कुछ, हाँ, वो आई थिंक आई लीव दैट टू यू. Yes, so the printout is basically that he told the cyber cafe guy कि मुझे ये प्रिंट आउट चाहिए. साइबर कैफे वाला बोला कि कितना, तो बोले कि सारा पेपर. एंड बोले कि क्या है, इज लाइक यस, एंड इट कॉस्ट सम, आई फॉरगेट द अमाउंट, इट्स इन द बुक, सम 400 कुछ, 4000 425 नहीं, 4000 तक है कि 400 था, मेरे को 400 याद है. 400 pages, and I think some 4,000 rupees, something, some amount, I think 425, I don't know what the amount was, but he prints हाँ, out नहीं, like this आपने लिखा picture. था कि कुछ उनका हाफ डे का वेज ऐसा चला गया था उसमें. हाँ, उसी में चले गए, एग्जैक्टली. हाँ, तो जस्ट प्रिंट आउट करने में, जस्ट टू प्रिंट ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, इट कॉस्ट हिम मनी. बट द ग्रेट एडवांटेज ऑफ दिस वाज द नेक्स्ट डे ही शोज अप टू काइंड ऑफ चेक कि टू मेक श्योर एवरीथिंग इज करेक्ट एट द साइबर कैफे. द सरदार जी अंकल इज वेरी हैप्पी. तो वो बोले कि यार कल का इतना अच्छा बिजनेस दिया है इस लड़के ने, तो वो बोलने लगे आओ बैठो बैठो और भी देखो, कंप्यूटर जितना दिखता है देखो. सो तो ये तो कहानी है. तो एनीवे, संजय जी तो डिसाइड्स कि मैं जाके देखता हूँ कि क्या है, मतलब पंचायत में क्या हो रहा है. And then he goes back to his village and then he sees all this, and he takes a bopu, walks around, figures out that सब corruption है. And Sanjay Sahani, who who's remember, he's a class 7 fail, migrant child worker who's now in his 20s. He thought he landed up on the scam of the year. मतलब ये सबसे बड़ा घोटाला मैंने अनर्थ कर दिया कि मेरे पंचायत में ये सब हो रहा है. He doesn't realize कि ये हर पंचायत की कहानी है और सब लोग पैसे खा रहे हैं. He doesn't know this. So he's obsessed. He's like, बाप रे, इतना पैसा मेरे मुखिया ने खा लिया. How can nobody do anything about it? And through chance, he gets in touch with Nikhil Day, the activist. इसका भी कहानी है. I'll leave the readers to read the book. But basically, Nikhil Day then puts him on to this bureaucrat called Santosh Mathew, who's rural development secretary. Santosh Mathew says कि संजय, जब आप वापस आएंगे मुजफ्फरपुर तो पटना में स्टॉप करो आप, and please tell me, please come and see me. संजय calls संतोष मैथ्यू that evening and says, मैं ट्रेन में हूँ, मैं निकल गया हूँ, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ. And then he shows up at Santosh Mathew's office. He tells him कि देखो भाई, इतना corruption चल रहा है मेरे पंचायत में. And he's just lucky because Santosh Mathew is an amazing bureaucrat who says कि चलो जांच करते, let's have a audit in your panchayat. And that audit is the beginning of the story of Sanjay Sahni, because correct. now he's famous कि he is the guy who brought Patna to Ratnauli village. To पूरा Ratnauli पटना का village. so that was the idea. Correct. And what happens when he reaches with this, with the printouts and like वो फिर क्या होता है? So basically, the audit team also shows up in the panchayat Yeah. when this happens, and the audit team is like, चलो बताओ कौन है, who, what are the names, who are the people who work, didn't work, and it's a pretty tense atmosphere because now अब तक क्या हो गया है कि Sanjay Sahni is already somewhat popular amongst the village. He's also somewhat unpopular amongst the village ruling elite. Elites, yeah. जैसे मुखिया जो है, मुखिया ने उनको गाली भी दिया है, बोला है कि क्या कर रहे हो तुम, चले जाओ, तुम तो दिल्ली में रहते हो, तुम दिल्ली में काम करो, या ये सब क्या कर रहे हो, राइट. तो उस ऑडिट जब होता है तो मुखिया और अपने स्ट्रॉन्ग मैन,
जो हेंचमैन होते हैं वो सब आ जाते हैं उस ऑडिट में. एंड पहले द ऑडिटर स्टार्ट्स रीडिंग कि महेंद्र पासवान आपने 80 दिन का काम किया, हाँ या नहीं. एंड दे स्टार्ट रीडिंग आउट नेम्स वन बाय वन. पहले कोई कुछ नहीं बोलता है. फिर एट सम पॉइंट आफ्टर द 5 or 6 नेम्स आर रेड, वन मैन पाइप्स अप एंड ही सेज कि ये जो नाम आप बोल रहे हो ये नाम तो है ही नहीं, मतलब ये आदमी जो रहता ही नहीं है इस गांव में, ऐसा कुछ बोलता है. मतलब इट्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट. दिस यंग इज अ यंग लॉयर इन द पंचायत. he makes the he tells the auditor ये गलत है. As soon as he says it, the mahal of the audit changes because somebody has finally opened up on corruption and providing evidence to the auditor. In that gaon, at that moment, something has changed dramatically. The Mukhiya and their henchmen jump, they start bashing people up. Sanjay gets a few hits, the auditors leave in a haste. But ठीक है, वो सब तो procedurally तो कुछ हुआ नहीं audit से. But between Sanjay and that active, that young lawyer, his name is Ramkumar Thakur, they have challenged the village elite in front of the Patna officials. And the sad epilogue to the story was, and I'll say this now in a different way, I met Sanjay in August. दिसंबर में मुझे कॉल आया भाई, मुझे अभी भी याद है कि मेरा एक कॉल आया. अब मैं शाम को पटना में कोई होटल में खा रहा था एंड आई गेट द कॉल एंड द कॉल इज कि राम कुमार ठाकुर हैज बीन मर्डर्ड. And I am shocked because I have gone to Sanjay's village. I have not met Ram Kumar Thakur, but I have gone to Sanjay's village a few times by then. I know people there, and I'm just like, what? And they're like, yes, Mukhiya and his henchmen, in broad daylight, surrounded him and shot him, and they killed him. And a team was supposed to go, for a team of activists was supposed to go and show up, and they were going in a car. And they were, that's the call I was getting कि ये fact finding report करने जा रहे हैं हम, तो हम आपको बस inform कर रहे हैं because you're working with Sanjay so much, so we want to tell you this. But that tells you how antithetical the idea of questioning is to the rural elite. They cannot take the fact that कोई उनसे पूछ रहा है सवाल कि आप कैसे fund allocate करो, क्या कर रहे हो. And this is not the Bihar of Lalu. This is 5, 6, 7 years after Lalu has left. And yet, it can still happen that people in government can use such kind of repressive violence, including murder, to stop people from questioning. एंड इसका संजय के एक्टिविज्म पे कैसे क्या इफेक्ट पड़ता है इस घटना का? So shuru mein he was a bit, I remember this because I remember speaking to him and he was a bit taken aback, and he also said even the Mazdoors were taken aback. Which year was Because this? 2012, 12 only. 12 December. So, and this was a time when there was a lot of early gains being made, not only in Ratnauli and Matmaneri, but a few, like 10, 12 other panchayats. So they had started to build a movement, started to get Mazdoors to come together, started to get them all to come and ask for NREGA work, and actually getting NREGA work because, no force, even the Mukhiyas often cannot fight against 100 Mazdoors demanding something. It's very hard. Collective action matters and it is powerful. And then the murder happens. तो मजदूर भी डर जाते हैं ना कि मतलब ये लोग गोली बोली तो किसी ने सोचा नहीं कि गोली चलाएंगे ये लोग. But it turns out Ramkumar Thakur also has tried to expose other kinds of scams in the panchayat. So it was not just NREGA, he was also working on a solar scam or some. So he had a ongoing set of vigilance related issues with the Mukhiya. And I think at some point the Mukhiya was just like, we have to get rid of this man. Right? So initially there is a bit of a lull, but not for too long. And this is what I think is amazing about the movement, which is that कि 2-3 महीने तो हाँ हुआ कि लोग थोड़ा डर गए, बट उसके बाद पीपल स्टार्टेड कमिंग बैक कि नहीं हमको काम चाहिए, हमारा हक है, एक आदमी को मर्डर किया गया. एंड द थिंग वाज part of the reason the response was quite strong was also because that panchayat was already under the scanner. Patna had sent an audit team. तो उस ऑडिट टीम एंड ऑल हैड गॉन देयर, सो देयर वाज ऑलरेडी अ फीलिंग कि यार रत्नौली में हमको देखना चाहिए क्या हो रहा है. तो एज सून एज द मर्डर हैपेंस, पीपल इन पटना गेट टू नो and they're suddenly very interested. And then Nikhil Day and all these activists also come and start making noise. So there's a lot of support from the civil society activist community and from the government for the Mazdoors. And that kind of helps keep the movement. एक सेगवे ले रहा हूँ छोटा सा मैं. सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म का और एक ग्राउंड लेवल पे जो हम सिचुएशंस देखते हैं, इसका एक कोरिलेशन आप थोड़ा बता सकते हो? और उनका जैसे आपने बताया कि एक मर्डर हुआ तो सिविल सोसाइटी की तरफ से एक हमेशा एक प्रेशर आ गया, एंड आज के माहौल में सिविल सोसाइटी बड़ी बदनाम है बाय गॉड. मतलब वो तो मतलब यू नो बेटर देन
me, Yes, yes. as part of you, you are also, related. तो सिविल सोसाइटी का इस सब जगह हम कहाँ का क्या रोल और क्या रिलेशनशिप, आप थोड़ा बताना चाहोगे? So I think the civil society has a very big role in kind of doing any kind of collective action. It's very hard. It's for Mazdurs to kind of come together without the help of a broader support from either NAPM, for example, or other Sangatans, or all of these other kind of solidarity giving forces is very important for things to happen. That's point number one. But point number two, I think is more important, is the reason the Sanjay Sahni movement is, the Muzaffarpur movement is unique is because Sanjay Sahni himself was not a member of the traditional elite in society. काफी बार जी। civil society is made up of people like you and me, people who are राइट। privileged, who are willing to take a salary hit and do everything and go back and try and mobilize people. So even the best activists, the Nikhil Days, the Aruna Roys, Harsh Mandars, or even the even in Bihar, the JJSS people, Ashish and Kamyani, were all elites. They elites who give up everything and say we will fight for the poor. संजय सानी is very much a man who's amongst the poor who decides to mobilize. So करेक्ट। उनके लिए बहुत मुश्किल होता है. And then I'll say one final thing. Civil society also matters because elite networks are very important in putting pressure from above. जब मजदूर नीचे से प्रेशर डालते हैं सरकार पे, अपने लोकल सरकार पे, तो ऊपर से भी आपको प्रेशर चाहिए, आइदर ब्यूरोक्रेट्स, हायर ऑफिशियल्स और मीडिया. And all of those things, the average मजदूर has no way to connect to them. नो वे। बहुत नो वे। मुश्किल है. So you need civil society with elite presence. That's very important. गॉट इट। सो कमिंग बैक, तो ये सब जब होता है, देन उसके बाद आपने, आप बुक में ये चीज मेंशन करते हैं कि इशू करप्शन का सॉल्व नहीं होता है, बट सबको एक चीज से समझ आ गई थी ऑन द फेस की मुखिया करप्ट है। ये तो बिल्कुल समझ आई थी बिकॉज ये पहले से सबको पता था शायद. बट जब संजय स्टार्ट शोइंग हम रिकॉर्ड्स कि ये को आपके नाम पे इतना पैसा लिया गया है और आपको एक भी रुपए नहीं मिला है, सो दैट काइंड ऑफ चेंजेस द डायनामिक कंप्लीटली. एंड देन द ऑडिटर कम्स इन एंड एवरीथिंग. सो समटाइम्स इट इज द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज मोर देन इनफ टू मेक चेंज. गवर्नमेंट डी नॉट इवन एक्ट, इट्स जस्ट द इंटेंट कि मैं आपको ऑडिट करूंगा या मैं एक वॉच्ड ऑडिट करूंगा, but now my eyes are on you, is sufficient to bring about change. गॉट इट। एंड व्हाट, तो संजय जी का पहला क्या, बिकॉज ग्राउंड लेवल पे मूवमेंट शुरू करना मतलब बहुत बेसिक पे, जैसा आप बुक में बताते हैं, बहुत बेसिक पे काम करा है कि जॉब कार्ड है कि नहीं, उसमें आपने एंट्री मारा है कि नहीं मारा। ये Right. नुआंस थोड़ा बताओ ना, कि मतलब एक वर्कर के लिए नरेगा का बेनिफिट को क्लेम करना उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज है और टास्क है, ये कैन यू थ्रो सम लाइट देयर? See, the first rule is NREGA does not work as work on demand. मैंने आपको आपको एक कहानी सुनाया है कि बोला कि अगर मैं मजदूर हूं तो मैं जाके मुखिया से बोल सकता हूँ मुझे काम चाहिए और उसको देना चाहिए. ये होता ही नहीं है. मतलब 99.999% ऑफ केसेस में कोई जी। मजदूर जाके मुखिया से बोलेंगे मुझे काम चाहिए, मुखिया बोलेंगे जाओ कहीं बैठ जाओ. तो ये होता नहीं है. तो कैसे होता है फिर काम? काम ऐसे होता है कि मुखिया तय करते हैं, यूजुअली जहाँ पे संगठन एक्टिव नहीं है, मुखिया तय करते हैं कि चलो इसको जॉब कार्ड दिलवाएंगे, इसको बोलेंगे कि चलो तुमको काम चाहिए ना, वैसे आ जाओ इधर, तुमको जॉब कार्ड देंगे हम. जॉब कार्ड में तुम्हारा नाम लिखा होगा, तुमको 10 दिन का काम हम देंगे, इस खेत पे या इस जगह पे आपको तालाब बनाना है, 40 और मजदूर को ले आएंगे हम, 10-12 दिन का काम है. एंड ये आपका जॉब कार्ड ले लो, ये आपका मस्टर रोल है, इस पे साइन करो. क्या क्या करते हैं फिर? अगर 10 दिन का काम है बोलते हैं 18 दिन का काम, और फिर 8 दिन एक्स्ट्रा डालते हैं, मजदूर से साइन करवाते हैं, फिर वो अपना पैसे लेते हैं. दैट्स द स्टैंडर्ड वे इट हैपेंस. मैं 18 में बी अ बिट हाई, बट बेसिकली दे विल डू सम करप्शन ऑन द लेबर, थोड़ा ज्यादा करके करते हैं. द अदर वे दे मेक मनी इज मटेरियल. अगर आपको नरेगा का काम करना है तो काफी बार क्या होता है, यू नीड मटेरियल, यू नीड ईट, यू नीड पत्थर, ये सब चीजें, ये सब पे ये लोग बोलते मार्जिन हैं कि बढ़ा के। मार्जिन बढ़ा बढ़ा के बोलते हैं कि हमने 100 मीटर का लगाया, बोलते हैं जबकि 20 मीटर का लगाया, ये सब भी चीजें. सो दैट्स हाउ नरेगा वर्क हैपेंस. Now, if I were a Mazdoor and had a Sangathan support, Sangathan will first take your name and file a job card application for you. How will they do it? Sangathan has activists who know people in the block office. They'll go file a application in the block office. जब आप फाइल करते हो, संगठन people know कि आपको ब्लॉक ऑफिस एक डॉक्यूमेंट चाहिए, एक पर्चा. इट्स कॉल्ड रिसीविंग. जब तक आपके हाथ में रिसीविंग नहीं मिलेगा तब तक आपको कोई एविडेंस नहीं है कि आपने कोई एप्लीकेशन दिया. ये बहुत ही ये एक ये वैसे इम्पोर्टेंट आपने चीज. लिखा है,
हाँ. I forgot it. It was very nice. It's a Verbalization of yeah, nouns. yeah, exactly. So it's like Uh, googling. ऐसे कि रिसीविंग एक होता है कि रिसीविंग एक वर्ड है, एक वर्ब है, उसको नाउन बना दिया उन्होंने. नाउनिफिकेशन ऑफ अ वर्ब करके रिसीविंग, एक रिसीविंग डॉक्यूमेंट आपके हाथ में मिलना चाहिए. सो देन यू ब्रिंग द correct. रिसीविंग बैक. देन आपका जॉब कार्ड एक एप्लीकेशन, जॉब कार्ड इशू होता है. फिर आपको काम चाहिए तो आप काम के लिए फिर से एप्लीकेशन डालोगे. फिर आपको एक और रिसीविंग मिलेगा. फिर 15 दिन के अंदर अगर काम नहीं मिलेगा तो फिर आप फिर से जाओगे, आप प्रेशर डालोगे. फिर अगर काम नहीं मिलेगा तो फिर आप एक सारे मजदूर इकट्ठा होके एक स्ट्राइक पे जाएंगे. फाइनली सरकार बोलेगी ठीक है यार ले लो, आपको काम चाहिए तो ले लो. एंड दैट्स हाउ वर्क हैपेंस. इट्स अ वेरी स्लो, methodical, frustrating process, but it's easier because now you're a bigger group, so you can kind of share the burden of doing that, kind of demanding and getting work. करेक्ट. और मजदूरों को जो पैसा जाता है वो कैश में जाता है क्या? नहीं, वो बैंक अकाउंट में जाता है. तो फिर so कैसे करप्शन होता है? so that's an interesting question. So one is you just say you tell the मजदूर की मतलब आपका अटेंडेंस में लिखा है 8 दिन, आपने 14 दिन का दिया, आप बैंक अकाउंट से ले लो पैसे और फिर हमको वापस दे दो. अगर आपको काम चाहिए, द डील इज यू वांट वर्क, आई विल गिव यू द वर्क, बट once you get paid you have to pay me a commission. So the deal is between the Mukhiya and the Mazdoor. And why does the Mazdoor agree to this? Because they want work not just this time, they want work every time. तो अगर मैं अभी बोलूंगा कि नहीं मैं वापस नहीं दूंगा आपको पैसे, तो फिर मुखिया बोलेगा अगली बार काम नहीं दूंगा मैं तुमको, इस बार मैंने आपको बोला. सो दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ द वर्क इफ यू सी is being done by people who are close to the mukhya, either geographically close or the same caste or the same network. वही लोग काम करते हैं क्योंकि ये सब डील्स अंडरस्टैंडिंग इजी होता है. So that's one kind of big learning that I had from all of this. And but all the money goes to the bank accounts now, so there's no cash transaction anymore. ये अभी हो रहा है, बट शायद उस टाइम पे ऐसा नहीं था क्या? आज से कुछ उस साल टाइम पे पहले. नहीं था, उस टाइम पे नहीं था. So when Sanjay first got there, सब कैश में हो रहा था, which made it supremely easy कि मुखिया सुप्रीमली बोल इजी. कि बैंक अकाउंट में जाता ही नहीं है तो मेरे पास आता है पैसे ना, मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है मजदूर मुझे को. करा तो फिर तो खत्म ही है मामला. हाँ, exactly. So that is the end of story. I think you write it very well that in the past year the village had transformed considerably. Over 700 Mazdoors had worked on 8 separate NREGA work sites. Most were first-time workers. Payments were still due for some, and local government officials continued to invent innovative hurdles. However, it was also true that the sleeping state had woken. All it took was one computer, one 7 literate man, and several hundred, mostly women workers. Yes, completely true. This is what it takes. Even to this day, when you see the Sangathan enter a new panchayat, यही होता है. एक कंप्यूटर, महिला मजदूर, काफी बार इलिटरेट, और वही लोग करते काम. थोड़ा संजय जी के आसपास में जो उनको सपोर्ट करते हैं संगठन में, इनिशियल मेंबर्स होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, उनके थोड़े लेट्स ट्राई टू मीट दोस कैरेक्टर्स व्हाई यू ऑल्सो वी नो देम इन द बुक, बट और कौन कौन से स्पेशली वुमेन? So my favorite woman in the whole Sangathan actually is Mandyasri Devi. जी. Mandyasri Devi, Madina Begum though hai, but Mandyasri Devi is the one I have, especially in the last couple of years, I spent more time with her. She is a 60 plus year old woman. Depending on which record you see, her age varies. ये तो standard है. मतलब, but and she is basically, she has this kind of shrill girl like voice, and she is completely illiterate and completely fascinating, amazing speaker, amazing thinker, and just like great activist all around. So I'll tell you a couple of stories about her. तो एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब this we can come to later in the conversation, but Sanjay stands for elections, for MLA elections. वो तो उसमें बहुत बढ़िया मंदेश्वरी स्टोरी है. हाँ. उसमें मंदेश्वरी देवी makes this amazing टीवी को एक स्पीच करती है. I have a recording somewhere. I put it up on Twitter when he was campaigning. She has a speech to camera about why the previous MLA जो है वो तो हमारे पास ना आते हैं, हमको ना देखते हैं, हमारे गांव कभी नहीं आए, हमारे हमको पहचानते भी नहीं है, मजदूर के लिए कुछ नहीं किए. नाउ शी सेल्स एवरीबडी हु इज लिसनिंग कि क्या आपको ऐसे कोई नेता चाहिए या संजय भैया जैसे कोई चाहिए जो आपकी आपकी तरह वो भी मजदूर है, वो भी मनरेगा में काम किए है, वो भी अनपढ़ है, तो वैसे आदमी चाहिए. सो दैट पावर ऑफ दैट एबिलिटी टू से विद इन 60 सेकंड्स व्हाई समवन लाइक संजय इज ग्रेट इज गुड. आई टेल यू वन या. मोर स्टोरी. पिछले साल वार्ड इलेक्शन में आई वाज टेलिंग मंदेश्वरी जी आप खड़े हो जाओ वार्ड इलेक्शन में, क्यों, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो मंदेश्वरी जी बोली कि देखो मैं आपको
दो चीजें बोलूँ। एक तो ये है कि जो भी अंदर जाता है सरकार के अंदर, वो लालची हो जाता है, और मुझे नहीं बनना है वैसे। तो मैंने फिर बोला मंदिर सिंह जी, ये तो सही है कि लोग ऐसे हो जाते हैं, लेकिन जो ऐसे सोचते हैं कि जो अंदर हो जाते हैं तो वैसे बनते हैं, तो वो लोग खुद नहीं बनते हैं ना, बिकॉज उनको ऑलरेडी पता है कि ये सारे प्रॉब्लम्स है। तो वो बोली हाँ ये है सच, बट ये एक और भी रीजन है, और वो ये है कि जब वो कोई अंदर सरकार के अंदर जाता है, तो लोगों को लगता है कि वो हमारे खिलाफ खिलाफ हो गए, दे आर दी अदर साइड। मॉनिटर बन गए हो आप क्लास के अब। हाँ, आप क्लास के मॉनिटर बन गए। सो शी इज लाइक, मुझे वो नहीं बनना है, मुझे मजदूरों के बीच खड़ा होके सरकार से सवाल पूछना सत्य सवाल पूछना। है। एंड आई थॉट दैट वाज सच अ great articulation of a very complex thought in such simple words. And this is सिंपल। why I really like her. Yeah, so she's करेक्ट। a fantastic speaker, great mobilizer, and very good या thinker. एंड आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक, राइट? क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि पावर करप्ट्स, तो और ये कितना मतलब प्रोफाउंड थॉट है, बट आई मीन द वे शी ऑब्वियसली टेल्स दिस इज इज अमेजिंग। Yeah. एक सेगवे और टुवर्ड्स नरेगा। Hmm. हम नरेगा का मैंने जितना सारा पॉलिसी में रिसर्च देखा है, मेरे को एक मोटा मोटा मतलब मैं बस ऐसा पैराफ्रेज करा, ऐसा लगता है कि 50 60 70% पॉलिसी वॉन्ग्स बोलते हैं कि नरेगा को बंद कर दो, ये पैसा बकवास है, ये गटर में जा रहा है सरकार को, इट्स मेकिंग द गवर्नमेंट बिग, इट इज मनी डाउन द ड्रेन, इस रिसोर्स को हम ले जाके हम कुछ और तरीके से वेलफेयर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एंड आई नो देयर विल बी सम रिसर्च, मैं रिसर्च नहीं बट मैं एनेक्डोटली आपसे पूछ रहा हूँ, आपका एनेक्डोट क्या है ऑन नरेगा एज अ स्कीम? So let me. Okay, stories are actually, yeah, I agree. They are kind of powerful. So the anecdotally, um, eh, so many stories from Ratnauli, but basically, take a case of say Somaria Devi, for example, another Mazdoor, who again is in her 50s, 60s. Wonderful woman. Again, she's actually she. My favorite thing about her is she's not such a great activist, to be honest, but wicked sense of humor, like very wicked sense of humor. And रात को एक हुक्का लेके बैठ हुक्का जाती है। जाए। हाँ, हाँ, so she's a fantastic person to kind of hang out with. But her house, she and her husband is Dukha ji. He has a bad leg, so he can't do much work. But and she has a son, and they're okay, they're reasonably well off, but not so well off. So she still has to work. And for her, Narega has been super important because she can get for 30, 40, 50 days of guaranteed work at minimum wage. 50 days of guaranteed work is about 20,000 rupees roughly, not 20,000 rupees, it will be 12,000 rupees, 12, 30,000 rupees, which is good enough कि आपको एटलीस्ट, जैसे आप घर में रूफ लीक हो रहा है तो ये तो आप फिक्स कर सकते हो, या आपको दवाई लेने हैं आपके हस्बैंड के, इसके लिए महीने का 2,000 रुपए का दवाई आता है, मनरेगा के काम से ये हेल्प में जाता है। सो इट्स एक्चुअली अ सोशल सेफ्टी नेट, कि जब आप गरीब हो तो आपको छोटे छोटे अमाउंट्स ऑल्सो मेक अ बिग डिफरेंस टू योर एग्जिस्टेंस, एंड सो दैट्स समथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट। The other place where Narega is important anecdotally is that it actually helps in kind of creating talabs. That's I think something that you really see, and also these roads. Matlab, the main road to the village is always done by government, like like a tar road or whatever. But then you have these kacha roads that take you within tolas. वो कच्चा रोड बनाने का काम ऑफन नरेगा के थ्रू होता है, एंड दैट्स वेरी यूजफुल, क्योंकि जो गरीब मजदूर होते हैं उनका घर अंदर अंदर कोई गली में होता है। अब उसके लिए रोड नहीं है, उसके साइड में नाला नहीं बना है, तो बारिश के टाइम में सब डूब जाता है। तो नरेगा का काम रियली हेल्प्स विद स्टफ लाइक दैट। सिमिलरली कि पानी का प्रॉब्लम हो तो एक बड़ा सा तालाब आपको दिखेगा, बहुत सारे नरेगा से बने हुए तालाब दिखता है, पॉन्ड्स होते हैं जो वाटर कैचमेंट एरिया होता है, जहाँ पे जब व्हेन देयर इज रेन वाटर दे आर एक्चुअली एबल टू कलेक्ट दैट वाटर एंड यूज इट फॉर थिंग्स। सो both in terms of giving you some small amounts of income to kind of help you tide over important but small expenses, and in building public infrastructure in villages, Narega is kind of super important. I think you write this as well, that uh, that the work of economists and other researchers does for a while run parallel to popular notions about the scheme. And what fueled this popular narrative of Narega, though the two reasons came to mind: that Narega harmed private landowners' interests across rural India. This class now had to pay higher wages for casual labor. Second, an influential stand of the commentariat in India is deeply influenced by mainstream economics and is suspicious of government spending and its ability to intervene meaningfully in the lives of poor. तो एक मतलब एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को शायद अब मिनिमम वेज उसका बढ़ गया तो उसको प्रॉब्लम है। सेकेंड ऑफ ऑल, एक हमारे थिंकिंग इलीट से जो टिपिकली शायद मिनिमम गवर्नमेंट और प्रो
स्मॉल स्टेट उस पर बिलीव करते हैं. तो आई थिंक दिस इज द रीजन व्हाई नरेगा गेट्स अ रिलेटिवली बैड. completely. कंप्लीटली And नहीं. this is why it doesn't square with the stories I'm telling you. I'm telling you कि गांव में जाओगे तो you can see the effects, but ये लोग करेक्ट. देखते नहीं है. करेक्ट. So, एंड इसका ये बड़ा मतलब आपने आपने बुक में भी लिखा हुआ है ये कि जब इनकमिंग गवर्नमेंट आती है 2014 की, मिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो उसमें डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दे फेमसली कोट कि नरेगा आपका 60 साल का जीती जागती मतलब आपकी नाकामियों का वो है. मतलब इट्स अ वेरी पॉपुलिस्ट. सुन के बड़ा ऐसा लगता है कि हाँ कितना सही बात बोली है. हाँ, जीता जागता वो है कि मतलब दिस इज अ सिंबल ऑफ योर फेलियर्स ऑफ पास्ट 60 years. एंड बट आई विल कंटिन्यू इट बिकॉज इट विल रिमाइंड पीपल ऑफ योर फेलियर्स. ये तो मतलब हाँ मतलब ये पॉलिटिक्स खेल गए आप कि अगर पूरा पॉलिटिक्स के लिए. ये अगर आप इतना वाहियात स्कीम है तो उसको हटाओ ना. मतलब बट ऑब्वियसली इट डिलीवर्स. इट हैज इट्स लीकेजेस. इट इज स्टिल नॉट द बेस्ट स्कीम. बट Yeah, I think in a country like India, it is sort of what social security schemes that you may have in US, where if you're unemployed, you get like a minimum amount from the right, government. Is it right. like some form of that? Is it correct? It is some form of that. And I think that's, I'll say two separate things. One is both after demonetization and during the Yeah, pandemic, yeah. Narega was the one of The 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 big save the ways. savior. The save, yeah, the savior. Right? PDS from the National Food Security Act, NFSA की वजह से Correct. 80% households को मिलता है गांव में PDS and Narega. These are the two pillars on which people were saved during both these massive crises. Right? So Narega very much is central to the government's ability to kind of make sure the poor kind of don't fall in kind of such bad poverty that they can't come out of it at all. Okay, that's point one. And then the second thing I'll say is that with the BJP government itself, they have not increased Narega allocations, but they have, and they've increased it slightly, but not enough, not to the extent that they should be doing it. But partly because the macroeconomic stability of India is so poor at this point, and that's because of pandemic, but also before that GST and before that demonetization, that we are unable to spend on anything. कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम पे हम पैसे नहीं दे रहे तो इवन नरेगा इज काइंड ऑफ हैम्पर्ड बाय इट. इनफैक्ट माय थिंग वुड बी इफ यू एक्सपैंड नरेगा द सेम वे यू एक्सपैंडेड द पीडीएस, you will actually see much bigger returns. Hmm. Absolutely. It's very obvious, right? Like इतना बड़ा पॉपुलेशन है उसको कहाँ से वो जॉब लाएगा, कहाँ से वो मोबिलिटी उसका अपवर्ड होगा, कौन सा प्राइवेटाइजेशन वहां पे पहुंच चुका है, कितना इंडस्ट्री है. कोई इंडस्ट्री मतलब अभी गुड़गांव से आप 50-70 किलोमीटर आप चले जाओ सारा इंडस्ट्री खत्म है. खत्म. No, कुछ नहीं है हम, है ना. दैट्स इट. उसके बाद मतलब एक दो आपको कहीं पे दिखेगा, कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पे, बट दैट्स इट. उसके बाद कुछ नहीं है. बट सो वेयर विल दे कम? एग्रीकल्चर कितना करेंगे? एंड एग्रीकल्चर इज ऑल्सो ऑल्सो लाइक ओवर एम्प्लॉयड. लाइक एक जहाँ पे एक एक का काम है वहां तीन तीन लोग काम कर रहे हैं. बिल्कुल. तो दैट इज And अगेन. completely true. And the other thing I wanted to say, I just remembered, was also that Narega had a vision. It was about exactly what you're saying, social safety net. It was also had a vision कि गांव में लोग इकट्ठे काम करें, अपने आप के लिए काम करें. It was a very Gandhian vision in that sense कि people of the village coming together to help themselves to kind of move forward, which I think is also a very important aspect of Narega. It was also about कि all this dynamic family structures, लोग छोड़ छोड़ के दूर 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 जा रहे हैं, थोड़ा तो उनको भी मौका मिल जाए कि गांव में ही थोड़ा काम मिले. So it had a very clear, coherent idea for why the government needs to do something like this to help the poor, which is very important. एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देयर शरण, विच आई थिंक जिसमें हमने बात नहीं करी कि ये सब मजदूरों की ये सब कौन सी कास्ट से आते थे और इनके Mhm. बीच में ओवरऑल क्या डिविजन्स थे और इन पे डे टू डे कास्ट का कैसे प्रहार पड़ता था. मतलब इसलिए कास्ट वुड फर्दर मार्जिनलाइज देम. Yeah, so all the Mazdoors here are either Dalit or EBC. And I'll tell you a little bit about the two types of these two types of castes, right? So Dalit is basically scheduled castes, and within Dalit, Bihar also has something called Mahadalit. जो दलितों में भी जो अति पिछड़े लोग हैं उनको महादलित बोला जाता है. It was a category made by Nitish Kumar. If you want to be cynical, you can say it was a category made so that he could build his own caste based amongst the Dalits, because उनका या. जो अपना caste है वो बहुत छोटा है, तो he wanted to build other people to kind of also vote for him. But ये महादलित castes are often the core members of the Sangathan. So जैसे माझी है जो it's actually a pretty
popular Dalit surname across pan India, because even though it's a Bihari surname, everybody knows it because of Jitanram Majhi, who was chief minister, and that Mr. Majhi, who उन्होंने जो वो नवाजुद्दीन की मूवी भी है जहाँ पे उन्होंने एक पहाड़ को तोड़ के, पहाड़ तोड़ रहे थे, हाँ। हाँ हाँ, तो वो तो माझी का एक कास्ट होता है. So they are very important. And then other than the non-Mahadalit में पासवान होते हैं जो again जी। are very important members. Extremely backward caste में जैसे सहानी है, जो संजय साहनी खुद है, they are all just in the caste hierarchy. They may be a bit above the Mahadalits and bit above the Dalits also, like the Paswans, but actually in the economic hierarchy, often they are below the Paswans. So they are ओ। all these Nai, Nat, ये सब कास्ट ईबीसी कास्ट से आते हैं. तो वो सब लोग भी आर कोर मेंबर्स ऑफ द संगठन. Now, how does caste affect their daily existence? Like I told you, they all live in caste segregated societies, so उनका घर अलग होता है ये सब. दूसरा, they don't necessarily engage. There's a lot of, I think the IHDS survey said about 40% of upper caste households practice untouchability in some form, starting from, different classes to not allowing Dalits to enter their house, EBCs to enter their house. EBC पे इतना नहीं होता है जितना दलित के साथ होता है, but होता है. So clearly, caste affects their day-to-day existence in their interactions with who they interact with, and if they're interacting with people from upper caste, they are talked to differently, they're treated badly. ये सब तो होता ही है. अब सोचो कि आप दलित का कोई घर से हो, आप एक महिला हो, आप अनपढ़ हो, आप 60 साल के हो, आप जाके अपने भूमिहार लैंडलॉर्ड को जाके बोलते हो कि मुझे नरेगा पे काम चाहिए. It's such a power dynamic is so stark. The only way that equation can be made somewhat more equal is if there are 100 such mahila who are like, हम सब जाके उनसे बात करेंगे. And जी। that's basically how collective action and caste come together. करेक्ट। एंड मुखिया जी का क्या कास्ट रहता है इस पूरी इक्वेशन में उस टाइम पे? So often, most likely, over 80% of Mukhyas in Bihar are not Dalits. Okay, about 60% of them are not Dalit or EBC. 65% of them are. So they are basically Yadav, often भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण. यही चार कास्ट से बहुत सारे मुखिया आते हैं. एंड इवन इफ इट इज रिजर्व फॉर विमेन, ये लोग ही अपना मतलब वाइफ को खड़े करके ये खुद चलाते हैं. एंड द सैड थिंग इज, कभी कभी ये भी होता है कि कोई दलित रिजर्व सीट में भी ये लोग क्या करते हैं, दे विल फाइंड अ दलित विडो, दे विल मैरी दैट विडो, and then they'll say ki my wife is now standing for elections, and please and she's actually the mukhya, but actually these people are running the whole show. So if it's a female Dalit reserved seat also, they are able to come around it. And sometimes they, even if it's just Dalit reserved seat, they will prop up a candidate who is their stooge. जो मतलब think of a case where मैं शेयर क्रॉपिंग पे लिए आपको लैंड दिया हूँ, so I'll say कि तुम खड़े हो जाओ, but we have a contractual agreement, you are supposed to give me a share of, I mean I'm letting you work on my land, so I'll run the government. So ये सब होता है. करेक्ट। आपने भी मुलाकात करी थी मुखिया से, I राजकुमार met, सैनी, राइट? yes, I met the deadly and murderous राजकुमार साहनी. बहुत चांस पे, मतलब हम गए थे कोई ग्राम सभा करने उस पंचायत में, संजय जी के पंचायत में, एंड वो ग्राम सभा वी कुडंट डू इन हिज पंचायत, बट उन्होंने मतलब थोड़ा स्ट्रांगली बोला कि आके चाय तो पी के जाओ. तो अपने घर बुलाया, बोले कि चाय तो पीना चाहिए, चाय तो पीना चाहिए. तो हम 4-5 लोग थे, 2-3 आशीष जी थे जो एक्टिविस्ट थे, बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे बिहार में. हम सब लोग बैठे थे. एंड आई रिमेंबर दिस वन थिंग, आई डोंट नो इफ आई राइट अबाउट इट इन द बुक. तो उन्होंने हमको चाय दी थी, ठीक है. वो चाय का कप अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा है, मतलब इट्स लाइक रीजनेबल अमाउंट्स. मैंने देख के बोला बाप रे, मतलब अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा चाय. बट देन एक्चुअली जो मैंने नोटिस, मतलब जब पीना शुरू किया तो नोटिस किया कि बेस जो है वो आधा से ऊपर है. मतलब ये यहाँ तक तो पूरा फील्ड है, इतना ही चाय है उसमें. बट जब आप ग्लास देखोगे ना तो बहुत ज्यादा लगता है. मुझे लगा कि कितना अच्छा मेटाफर है इनका काम के लिए. ये लोग बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कि हम इतना सारा काम करते हैं. तो इतना ही. But yeah, but nothing about him seemed off, or he didn't seem particularly threatening. But he was amongst the more crazy people I've seen. And what happened in that meeting? What was your objective? The objective actually was to not meet him. The original objective was we will not even meet. But because we had to go to a Gram Sabha, and he had already done his Gram Sabha, we realized कि ये activist लोग आने वाले हैं, उससे पहले हम Gram Sabha करके बंद कर देते हैं. तो जब तक हम गए तो वो बोले कि हम बस बातें ही किए आराम से. We didn't even bring up by that time. I think
Rajkumar Sani had already murdered, or the murder of Ramkumar Thakur had already happened. Or maybe maybe no, it didn't happen by then. But we already knew that maybe this man could be we knew he was corrupt. We knew that he had made a lot of money, and we were a bit wary of seeing him. But he insisted. He said, "अब चाय यहाँ पटना से आओ तो चाय तो पी के जाना चाहिए." And then he gave us chai, and then we went. And there is also some sort of not a banter actually, but तो आपके साथ भी I forgot the names of your colleagues in that meeting, but हाँ, there is a time when you define कि बहुत tense situation हो गया था कि मतलब आपको लगा था कि ये मतलब गोली वोली की बात चलने लगी थी वहां पे. तो ये एक और मीटिंग, एक और मुखिया है भोजपुर में, बिहार, वहां पे एक मुखिया से बात किए थे. So that was I write about it extensively in the book. But basically, there was this mukhya who met us on the highway in his car. मतलब अपनी गाड़ी में बिठा के वो आगे बैठे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, उनके ड्राइवर है. एंड देन वो एक वीडियो देख, उस गाड़ी में एक छोटा सा कैमरा वीडियो है चल रहा है, उस वीडियो में खुद मुखिया का ही शक्ल है. तो बहुत ही अजीब एक सिचुएशन, गाड़ी के बैक सीट में हम बैठे हैं. एंड मेरे कॉलीग थे, जो फ्रेंड्स थे, तो वो मुखिया से बोले कि हम आपके पंचायत गए थे और बहुत सारा करप्शन देखे. तो फिर मुखिया बोले, यार मतलब आई गिव यू द शॉर्टर वर्जन, बट ही बेसिकली सेड, ओ दैट्स फाइन, आई मीन so what, or some version of that, basically saying I won the election when I was in jail in Jharkhand. I was not even there. I came out of jail and I saw these people who were kind of supported by the CPIML, who were making a lot of halla. तो वो उनके गांव गया, मेरे 2-3 गोली चलाया, सब चुप हो गए. अब उनको मैं काम नहीं देने वाला. And it was shocking how calmly he mentioned all of this. And this is an encounter that I'll never forget. And it was quite scary, to be honest, to be sitting in that car with this man who talked about firing rounds of bullets so openly. So casually, yeah. हाँ Yeah. मतलब आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर याद आ गया होगा हाँ, शायद. मैंने एक्चुअली गैंग्स ऑफ वासेपुर का पार्ट 2 वहीं पे पटना में ही देखा था, मॉल वो में. इट वाज प्रीटी कूल. वाह. हाँ. करेक्ट. टेल मी अबाउट कि संजय किस तरीके से सिस्टम को चैलेंज करते हैं, स्पेशली इन द नेक्स्ट 2 3 4 years, एंड हाउ व्हाट आर हिज की माइलस्टोन्स, उनके क्या अचीवमेंट्स रहते हैं, एंड इवेंचुअली वो कैसी रिलेशनशिप फोर्स करते हैं विद द स्टेट, एंड लाइक व्हाट द स्टेट थिंक्स ऑफ हिम इवेंचुअली. So great question. So I think the in a graph it's always ups and downs. This is one thing that I have realized with all this kind of activism is key. You'll have these great victories and then immediately it'll be precipitous fall. But basically he slowly starts expanding the Sangathan, and more Mazdoors from more and more different panchayats start joining. And he also does multiple strikes, and it's kind of the modus operandi is so standard. जाओ, एप्लीकेशन फाइल करो, लोगों को सिखाओ कैसे फाइल करना है, लोग सीखते हैं, फाइल करते हैं, काम नहीं मिलता है, प्रेशर डालो, और मजदूर को इकट्ठा करो, और प्रेशर डालो, फिर बोलो कि ये कुछ नहीं सुन वो रहे, चलो एकदम बड़ा स्ट्राइक. टेक्स्ट बुक टेक्स्ट मूवमेंट बुक. जैसा हो तो वो. हाँ. मुझे लगता है कि एक्चुअली द गुड थियोरेटिकल फ्रेमवर्क हियर इज से देयर इज अ बुक बाय बिपिन चंद्रा अबाउट सत्याग्रह एंड इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, where he talks about it's called, I think, India's national movement. He talks about it as struggle, truce, struggle, prime framework. मतलब पहले स्ट्रगल करो, मतलब पेटिशन करो, एप्लीकेशन डालो, देन सरकार थोड़ा काम देती है, थोड़ा नहीं देती है, तो ट्रूस पीरियड होता है, थोड़ा आप काम करो, फिर आप स्ट्रगल प्राइम, थोड़ा और स्ट्रगल करो, मतलब तो एक एक अलग सा लेवल को लेके जाओ कि पेटिशन को छोड़ दिया, काम थोड़ा बहुत मिला, इतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए, तो थोड़ा और स्ट्रगल, मतलब put in more applications, kind of get into a bigger thing, maybe even do a strike. Then the sarkar will kind of bend down and then they'll then you put more pressure. So that's basically the cyclical way of kind of how this happens. Over the next 3-4 years, actually, the Sangathan expands pretty reasonably. So between 2012 and 17, barring I think 16-17 में संजय got into his head कि ये बड़ा से नहीं चलता है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल एक कैंपेन ही स्टार्टेड कि एक पंचायत को हम पूरा करप्शन फ्री बनाएंगे. सो बाकी सब पंचायत में संगठन चलता रहेगा, बट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दिस वन पंचायत, हिज ओन पंचायत, महात्मा रत्नावली 2 पंचायत ले लिया, उन दोनों पंचायत में ही सेड करप्शन पूरा फ्री करेंगे. जो मुझे लगा बहुत गंदा आइडिया था, क्योंकि आप देखो मुखिया का भी धंधा होता है, आप हर चीज हर जगह पे आप घुसेंगे, नॉट जस्ट नरेगा, तो एट सम पॉइंट आपका रिपरकशन बहुत बुरा होगा, क्योंकि ये लोग बोलेंगे यार कि मुझे काम करना है, मुझे पैसे भी कमाना है. अब अगर हर चीज पे आप करप्शन बंद करेंगे, सो देन वन मुखिया is facing too much pressure from the sangathan, they will there'll be an outburst.
एंड दैट्स एंड दीज गाइज वर डूइंग एवरीथिंग. रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो मजदूर को जाके भेजो और मॉनिटरिंग करना. स्कूल पे टीचर आ रहा है नहीं, मजदूर को भेजो और देखो कि स्कूल पे टीचर. मतलब दे पुट सो मच प्रेशर. And then I think it was not useful because beyond a point, the marginal returns to that kind of effort is lower. It's better to kind of put more effort in newer panchayats than intense effort in one or two panchayats. But he did that also for a bit, and then they went back to expand. अच्छा यार, कितना क्या केस स्टडीज बन सकते हैं इस पे, आपको नहीं लगता? Yeah, हाँ बहुत सारे बन सकते हैं. ये मतलब yeah, it's amazing. Yeah. Actually, we should talk about this at the end. There's a great epilogue to the book in terms of what happens after in the 2021 Panchayat elections. We'll come to this at the end, but I'll just say Correct. preface it now. Sanjay's brother is now the Mukhiya of Ratnauli. ओ, ये तो So it's a क्लाइमैक्स whole. क्लाइमैक्स आपने बता दिया अभी. but ये कहानी मैं बाद में सुनाऊंगा. But it's like a very interesting. वो भी Correct. एक केस स्टडी है, इसलिए when you said case study है वो. And in case I miss, just remind me. 2017 में you are in the Patna's old secretariat building, Yeah. and there is actually a situation between SPSS जो संजय जी का संगठन ही है, हाँ. and District Rural Development Authority. हम्म. ये इसके बारे में बताइए, what was that situation and what led कि यहाँ से सब छोड़ के रत्नौली से, और वो पटना का सफर वैसे ही साला बहुत लंबा होगा जो मैं समझ सकता हूँ, गूगल मैप से मैंने देखा था. हाँ, तो हाँ, वो हाँ, मतलब हाँ. इतनी सब जाती हैं, और वो क्या सिचुएशन क्या हो जाता है ऐसा कि उनको जाना पड़ता तो है? उसमें प्रॉब्लम ये था कि उनको मजदूर को वेजेस नहीं मिला जितना काम उन्होंने किया. They were supposed to get paid a daily wage rate. These are Mahila Mazdurs. They were supposed to get a daily wage rate that was close to what the standard minimum wage is, but they were paid much lower. The reason the government said was उन्होंने इतना ही काम किया. तो जितना हमने देखा उतना ही काम किया, तो उस हिसाब से हम पेमेंट कर रहे हैं, ना नॉट ऑन अ डेली वेज बेसिस. एंड द अग्रीमेंट वाज इट विल बी अ पीस रेट. पीस रेट का मतलब बेस्ड ऑन हाउ मच वर्क यू डू. सो द मजदूर सेड कि ये हमको बताया नहीं गया एंड हमको पता नहीं था. अगर आपको लगता है कि हमने काफी काम नहीं किया तो फिर हम श्रमदान करेंगे. हम वी विल वर्क एक्स्ट्रा फॉर फ्री, बट प्लीज गिव अस द वेज दैट वी वांट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्क. दैट वाज द आर्गुमेंट. तो वो करते रहते फाइनली वो पटना में सेक्रेटरी के साथ एक मीटिंग आ गया था, रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी. इज अ ग्रेट गाय, दिस गाय कॉल्ड अरविंद चौधरी, एंड फैंटास्टिक ब्यूरोक्रेट. एंड ही called all the Mahila Mazdurs of the Ratnali Mathmanyari and of the movement. I forget which panchayat it was in, the dispute was for. And on the other hand, there was this battery of government officials, district level official, block level official, panchayat level official, सारे bureaucrats आ गए थे. And इनके बीच एक डिबेट चल रहा है, सेक्रेटरी वहां पे बीच में बैठे हैं और वो अंपायर, वो देख रही है, मजदूर कुछ बोल रहे हैं, फिर ये लोग कुछ बोल रहे हैं, ये लोग कुछ बोल रहे हैं, ऐसे चल रहा है. And the Mazdurs were incredible. It just so happened that I was in Patna at that point. I actually think I went for this meeting because I was told कि ये होने वाला है. And actually, one of the memories I have was my close friend and colleague Chinmay Kumar was there, and he drove us. And I remember it's me. So Sanjay ji Chinmay आगे बैठे हैं गाड़ी में, मैं और मेरे साथ. I think Chinmay का उस time पे he had one of these smaller cars. I forget the name of the car, but मेरे साथ 5 women. We were 6 people in the back seat. And it was a short ride because they had come till close to the secretariat and then we had to just go in. But 6 log in the back seat. And it was amazing. And it tells you two things, right? One is, of course, they are very used to squeezing into small places, but partly also because they're extremely tiny. Bihar is the only place in the world where I feel like a giant, and I'm quite, I'm 5'7.5". So there's not. It's the only place where I feel like I'm so much taller than everyone else. So anyway, so all of us kind of show up at this meeting, and the secretary is so impressed by these women that he's just like, I can't believe कि ये लोग अनपढ़ गांव के मजदूर हैं. मतलब मुझे लगा कि they know everything about the act, they know exactly how to debate, they have an answer to every question. बट वो स्टेलमेट चल रहा था क्योंकि एट सम पॉइंट इट बिकेम ही सेड शी सेड कि मजदूर बोलते हैं ऐसे तो वो लोग बोलते नहीं. तो द थिंग आई टॉक अबाउट द बुक व्हिच इज रियली नाइस इज दैट एट सम पॉइंट द सेक्रेटरी सेड कि चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं. तो वो निकल गए. एंड अचानक ये सारे महिला मजदूर जो इतने हल्ला कर रहे थे, बातें कर रहे, चिल्ला रहे थे, कुछ रो भी रहे थे, मतलब इतना वो इमोशनल हो गए कि दे ऑलमोस्ट क्राइड. सडनली द ब्रेक टाइम पे सब लोग साइलेंट, चुप चुप हो गए. तो मैं डर गया, मुझे लगा कि अरे यार थक गए बेचारे, मतलब इतने टाइम से डिबेट कर रहे. एंड सब लोग ऐसे बैठ के कुछ देख रहे हैं. तो देन आई वाज जस्ट लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन.
And again, because I'm taller than everyone, I was able to kind of just look over them, peer. And then what is happening is they're looking at, I think it was Madina Begum's new daughter-in-law's photograph or potential daughter-in-law's photograph. They're all looking at it. And it's amazing how they're able to use WhatsApp. So they're using their fingers and zooming into the screen, and somebody says, Achhi hai, and somebody says, Ah, acha hai. And I'm just thinking, Baap re, matlab, we're in the middle of this old secretariat building. 150-year-old बिल्डिंग, इतना डिबेट चल रहा है, बीच में लोग ब्रेक लेके मतलब देख रहे हैं फोटो में क्या चल रहा है. And that spirit of knowing that there are these small things in life that you have to rejoice in and you have to appreciate while also fighting the bigger struggles is something magnificent about the करेक्ट. Sangathan Muslims. एंड आई थिंक शरण, आई मस्ट अप्रिशिएट आप जिस तरीके से आपने कुछ चीजें डिफाइन करी है. आई थिंक नॉट जस्ट वन, मेनी योर राइटिंग्स एंड आई हैव हाइलाइटेड ऑल ऑफ दीज. बट जैसे आप बोलते हैं कि एंड आई कोट, मदीना बेगम्स टू फिंगर्स which perhaps never held a pen effortlessly pins the screen and separated. The image zoomed in onto a young woman's face. अच्छी है, someone declared. She's nice. And murmurs of essence followed. So yeah, I think, and the way you said it, I think this makes so things so poetic, right? कि जिस उंगली ने कभी पेन नहीं पकड़ा, वो अभी Right. ऐसा व्हाट्सएप को जूम करके देख रही है और बोल रही है. एंड डिजिटल रिवॉल्यूशन मतलब का बोल लो या जिस तरीके से बोल लो, तो which actually brings me to the question, can they write still, या अभी भी बस वो राइट नहीं कर सकते बट फोन पे सब कर सकते हैं, मतलब फ्रॉम. फोन पे कर सकते हैं. एंड फोन पे भी WhatsApp calling is easier because they have to kind of look at image or whatever, and then they can just press call next to that image, so they don't have to read. And they all can do basic signatures, so maybe that they'll be able to do, but many of them still do thumb impressions also. So that's the level. Because see, NREGA ka core working base, because the wage is still pretty low, is actually women in their 40s. They are the grandmothers. Basically, Bihar mein, if you're 42 in that age, in that caste group, you're a grandmother. So the 42-year-old grandmother who has no childcare duties, or limited childcare duties, is the one who is working on जो NREGA, जाता because है. they are, हाँ, because उनका wages जो होता है वो मिनिमम वेज है. मर्द लोग नहीं करते इतना कम पे काम, बहुत कम करते हैं आजकल. So it's mainly for women NREGA. कितना है उनका वैसे पर डे का वेज, या पर अभी जो अभी भी? 210 रुपीज, 210 दो रुपीज सौ पर डे. दो सौ सो दस रुपए पर डे. 210 पर डे. तो आप 6-7 दिन मतलब गर्मी में काम करो तो 1 घंटे का 30 रुपए मिलता है. So this is really bad. I mean, and the work is so hard. आई नो, पूरी कैन गर्मी में, इमेजिन. स्पेशली गर्मी के टाइम में जब करते हैं तो मुझे लगता है बाप रे कैसे करते हैं. एंड बहुत सारे वीडियोस है एक्चुअली नरेगा संगठन का मनरेगा वॉच वेबसाइट में, जो अगर आप देखोगे यूट्यूब पे, यू कैन सी वीडियोस ऑफ women and men quietly working, just quiet, just बस it's मतलब यार फिलोसॉफिकली भी ऐसा लगता है कि यार हमारा देश अभी कहाँ है, हम कितना लंबा लंबा बैटल्स हमको फाइट करना है. और मतलब मेरे को इतना अजीब लगता है, मतलब व्हेन स्पेशली अपर कास्ट प्रिविलेज फोक्स और इकोनॉमिकली अपर, ज्यादातर थोड़ा फॉरवर्ड लोग जब बोलते हैं इंडिया हैज अराइव्ड, इट इज नो मोर पुअर नेशन, वो डेवलपिंग वर्ल्ड नहीं है, हमारे बारे में गलत बोला जाता है, हमारा बुलेट ट्रेन देखो, हमारा डेवलपमेंट देखो, हमारा रोड देखो, हमारा मेट्रो देखो, आप इसके बारे में दुनिया क्यों नहीं बात करता है. मतलब यार वो 210 रुपए के लिए वो 43-44 डिग्री में काम करे, 30 रुपए घंटा में तुम्हारा एक इतना बड़ा पॉपुलेशन काम कर रहा है. तुम कैसे, मतलब ये मेरे को बहुत अजीब लगता है जब मैं आपसे ये सब बातें करता हूँ, मैं जो रियलिटी देखता हूँ और फिर मैं उन लोगों को देखता हूँ जो इंडिया को बस एक बहुत स्पेसिफिक नजरों से देखते हैं, लगता है कि क्या बकवास है. आई कंप्लीटली एग्री. मुझे एक्चुअली ये इट्स सो शॉकिंग, बिकॉज जब लोग ये लोग बोलते हैं रोड या मेट्रो देखो, मैं हमेशा उनको बोलता हूँ स्कूल देखो, हॉस्पिटल देखो, है ही नहीं हमारे पास. गांव के जो कंपाउंड जो मतलब, वन ऑफ माय फेवरेट सैड स्टोरीज इज दैट वन ऑफ माय फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड इज अ डॉक्टर इन अ विलेज इन बिहार. वो मेरे फ्रेंड को बोले कि भाई आप कंप्यूटर ले आना. ही वाज अब्रॉड, सो लाइक मेरे कंप्यूटर ले आना, तो कंप्यूटर ले आया. एंड दिस डॉक्टर बेसिकली, पेशेंट जब आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के ही राइट सम रबिश. पेशेंट को लगता है कि बाप रे ये तो मतलब कंप्यूटर में देख के कोई दवाई दे रहा है, बट एक्चुअली ही इज टाइपिंग जिबरिश ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड.
because, and then I was like, what, why is he doing this? Why can't he, why? Because A, it increases sales, कि मैं computer देख के कुछ बोल रहा हूँ. B, this doctor's only qualification to practice medicine is that his best friend studied Ayurveda. ये खुद जो है बॉटनी, बीएससी बॉटनी है, और ये गांव का डॉक्टर है. तो जब स्थिति ऐसा है, और हर गांव में आपको एक क्वैक मिलेगा, और हर आदमी को चाहिए सुई. मतलब पहले कोई बच्चा जो भी है सुई चाहिए पहले आप. ये वो सुई मतलब डाल. वी मेक एंटी वैक्सर्स टू शेम हाँ. ऑफ यूएसए, लाइक हमको सीरियसली, तो मतलब क्या है स्थिति है, मतलब हॉस्पिटल में कंपाउंडर नहीं है, दवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है. स्कूल जाओ आप, मतलब, एंड दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू ऑफ प्लेसेस लाइक बिहार, यूपी. स्कूल जाओ तो बच्चे भागते रहते हैं, टीचर आते हैं कभी नहीं आते हैं. मिड डे मील को देखो, अच्छा है मिड डे मील तो है तो बच्चे आते हैं, बट पढ़ाई नहीं होती है. मिड डे मील में भी खाना इतना अच्छा नहीं होता है. सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम स्कूल्स, हॉस्पिटल्स. दीज आर फंडामेंटल थिंग्स टू इम्प्रूव सोसाइटी. वो नहीं हो रहा है. दैट्स आई थिंक द ट्रेजेडी. करेक्ट. हाँ मतलब ऑब्वियसली, मतलब अगर आप अब देखो कि देख एक स्प्लिट व्यू है इंडिया का. एक व्यू है जो हम आप और मैं देखते हैं, और हम जो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, ठीक है, वो बहुत हम्म. अच्छा व्यू है. अभी कल का न्यूज था कि हम यूके को बीट कर दिया हमने इन द लार्जेस्ट इकोनॉमी. आई थिंक नाउ पीपल विल आई हैव अ सी. फील्ड डे ऑन व्हाट्सएप. राइट. Congratulations to them. राइट. So, and obviously then there is this view, Sharan, जो आप लोग आप तो मतलब एक there is a जो एक जिनका रियलिटी है, और जो वो उस व्यू को देखते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, कुछ ऑब्वियसली एक मेजर पॉपुलेशन उसको जीता है, जिसके लिए ये सब चीजें मतलब शायद किताबी होंगी. और हम लोगों के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये कि अ, हम किस टाइप का, किस हम इंडिया को किस नजर से देखते हैं, और हम किस इंडिया के लिए काम करना चाह रहे हैं. I completely agree, and this is so sad that And the truth is that both views have some truth in them. या But या as humans, as people who care about humanity, we should all be much more worried about the second view, which is that there are big gaps in how our development is happening, and somehow even just thinking about these issues is not seen as sexy, is not seen as important, and we are या seen as people who are complaining. And in fact, on the other hand, and this is kind of a side note, but I have actually received criticism for not strong but mild criticism, saying कि you still try and find hope in these places in your book. And my point is कि if you do not find the hope, it's very hard to do the work we do. कि if you're only focusing on the tragedy and not saying that, but there are ways to get out of it. It just requires kind of collective thinking, collective effort, proper policy making at the top. But there are ways, and we have to find what those ways are, and that's the way to kind of move forward. करेक्ट. एंड टॉकिंग अबाउट पीपल्स बिलीव इन वैक्सीन, आई थिंक यू आल्सो से कि भाई लोगों का कंप्यूटर पे विश्वास सुप्रीम है. कि मतलब लोग बोलते हैं कि इनफैक्ट इवन द मजदूर सेज कि इफ यू आर लाइंग, आई विल हैव दिस चेक्ड ऑन द कंप्यूटर, व्हिच इज इनफ ऑफ अ थ्रेट टू मेनी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, राइट? राइट, या कि क्योंकि नरेगा वेबसाइट पब्लिक है, तो या सबको एवरीथिंग दैट हैपेंस अंडर दैट स्कीम इज पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर. एंड मजदूर को भी पता है ये, सो सरकारी ऑफिसर को जाके बोलते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो और ये कंप्यूटर पे सच है. तो दैट इज अमेजिंग. और फाइनली उस मीटिंग का क्या होता है पटना वाली, व्हाट्स द कंक्लूजन? It's a bit of a tragedy. So what happened was, so उस and I don't write about it in the book. I think for this reason partly कि जो ब्लॉक ऑफिसर जो ब्लॉक ऑफिसर जो होते हैं पटना में, वो सॉरी मुजफ्फरपुर में, वो ही शोज अ वीडियो इन द एंड. दैट्स हाउ द मीटिंग इज रिजॉल्व. उस वीडियो में he has recorded a video where he is making the announcement to some of the Mazdoors who were in that room, but many others, saying, ये आपका wages है, and इतने दिन आपने काम किया है, so उस हिसाब से इतना आपको पेमेंट मिलना चाहिए. So he actually had announced it to them, but they had misunderstood the what work that he was talking about. They thought it was another work, but he was talking about this particular project. And so then the secretary was like, but he's right. When he made the announcement, he's told the workers कि इतना wage आपको मिलना चाहिए इस पे. And these people did not raise a halla then. Why are they raising a halla later? That's because they misunderstood. So this was the one case where actually it was more the Mazdoor's fault. But, and here's where I think
it is very interesting. So here, I think the Mazdoors were actually in the right for the work that they had done. They should have gotten paid more, but they misunderstood what the guy said, and so therefore the government procedurally was more right. But my bigger takeaway from this meeting was once we came out, the Mazdoors understood कि अच्छा ठीक है, we misunderstood. But then they also, in their minds, they're so suspicious of everyone that they were like, was the video a fraud video? But then we were like, यार इतना फ्रॉड तो इतना डीप फेक कोई नहीं कर सकता है, आप लोग सब बैठे हो वहां पे, सो इट्स नॉट लाइक अ थिंग. द सेकंड थिंग दे सेड वाज, नहीं नहीं बट फिर भी हमको और मिलना चाहिए था, लेकिन वो सेक्रेटरी को किसी किसी से कॉल आ गया इसलिए वो चले गए बीच में, सम कॉन्स्पिरेसी थियरी की कि दे आर अगेंस्ट अस. And we had to sit them and say, even Sanjay was indulging in these conspiracy theories, and I had to literally sit them down and say कि क्या कर रहे हो आप लोग, मतलब हो गया ये, मतलब fight for the next struggle. And I talk about this briefly in the book कि what it drove home to me is that ये सब लोग थोड़ा कहानियां बनाते हैं अपने दिमाग में to keep themselves going. They tell themselves a story about what is happening, what went right, what went wrong, such that their worldview continues to be somewhat positive. So kabhi kabhi even the Mazdoors should tell themselves, slightly delusional stories in order to kind of at least keep going. And this is something that I keep seeing. या एंड ये बाद में भी होता है, राइट? आगे भी हम देखते हैं कि संजय कैसे कुछ कुछ थ्योरीज बनाते हैं कि पटना से सीएम जो है मुखिया का उसका हाथ इस मुखिया पे, एंड Yeah. ऑल ऑफ दैट हम विल Yeah. टॉक अबाउट इट. एक ब्रीफली आई थिंक मैं, एक आपका जो विजिट था विद, इसमें आप चैप्टर 4 में जो मेंशन करते हैं कि मुहास मुसाहार, सॉरी सॉरी, हाँ, Musahar. Right. वहां पे आप वेडिंग में जाते हैं, हाँ. और आई थिंक why documenting this experience was important. I think the to kind of emphasize how unequal society is and how Dalit lives are so different. So this is another wedding. So this is a second wedding I'm bringing up in this conversation. So the first wedding I went to with the guns and the soft porn was a upper वो caste. It तो was a Pandey wedding. एंड 2007, हाँ, राइट? that was 2007. It was a Pandey wedding. हम्म. The Musahar wedding was completely different. Matlab, agar, I talk about this in the book, but everything from the kind of food being served, from where we were sitting, from how we were treated, from how the mandap looked, which was basic, very basic, but also very garish and weirdly lit, um, and the aesthetics of that, and from how the girls who were getting married looked, everything uh, was a fully different world from what we had seen earlier. So I think that that's basically why I documented to say कि ये मुज़ाहर लोग, इनकी शादियां में जो खाना मिलता है, जो जैसे वो अरेंजमेंट्स होते हैं, even that is nowhere close to what a day-to-day experience in many upper caste households will look like. The upper caste करेक्ट. households will have much better food. The Coca-Cola will not be stale. Like all these other things that you will see, that you will not see in a Musahar wedding, which is why I wanted to document it. करेक्ट. एंड इसमें आप लिखते भी है कि musahars are often called the Dalits amongst the Dalits. The word musahar literally translates to the one who eat rats. To this day, they are mostly farm labor in Bihar and severely discriminated against. The musahars of Harshankar Maniari all carry the title Manji. So this is where the Manji reference comes from. Exactly. Uh, So they are the uh, Mahadalits. दे आर द एक्चुअली द महादलित्स. एंड आप इसमें बताते हैं कि बहुत यंग टू लड़कियां हैं जिनकी शादी हो रही, शादी की 18 है, एक 16 है. Hmm. एंड what sort of, you know what was sort of weird was, I think you talked about consumption of opium sort of in that particular scenario. वो क्या था? वो समझ ही नहीं आया मुझे. समझ तो आया मुझे, So, but I know. हाँ. so I think it was child marriage, and so that's the thing, right? So it's not to say that, but I think it's important to document the complexities involved in even in Dalit society. That जी. even if you are Musahar and Maji, you can still be oppressive towards minorities within your own community, and in this case, women and children. करेक्ट, And करेक्ट. that oppression can be perpetuated by women themselves. So it's such हाँ, a, हाँ. and this is a kyunki saas bhi kabhi bahu thi angle, but basically the idea is that in this shadi, the two girls who are getting married are sisters. One of the girls was maybe 18, the other looked almost certainly below, was underage, and the other kind of had this kind of almost kind of doped out eyes, and she looked completely out of it.
And much later, I'm talking to other people when I come back to Delhi and I'm describing this, and people who have worked in this context, who have spent time documenting child marriage and child labor, and they were just like, oh, this is kind of a common practice, especially if the girl is a minor and she's getting married against her wishes. One of the ways to make like the first night and everything kind of palatable, the wedding night palatable, is to kind of drug her. And it was kind of very sad to see that scene. And again, this is not to take away from the oppression that Musahar's face, Maji's face. This is not to say that this is a Maji phenomenon only. It happens in every caste. But this is to kind of just faithfully document what I saw. करेक्ट एंड आपने मतलब कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स भी आपने दिए हैं जहाँ पे आपने कहा है कि Dalit in Bihar were likely to die at birth than his or her non-Dalit counterparts. If they survived childbirth, they had lower birth weights, attended fewer years of schooling, had lower lifetime incomes, fell ill more, were raped more, were barring a few exceptions, almost invisible in the public sphere, died much younger than anywhere else. And the best line, I think, of your book is, and yet there is resentment in our cities and villages that when government jobs or educational opportunities or political positions are reserved for Dalits. Right. Uh, मतलब yeah. ये कैसे, how this the inequality is so stark? How is it even? Sometimes you can explain it to a child कि देखो भाई, at every level these people are worse off. तो उनके जी लिए कुछ तो देना चाहिए. एंड हम ये नहीं बोल रहे, nobody is saying कि reserve every single seat. या They are सब कुछ ही reserving मतलब फ्री में दे दो सब कुछ वो दे दो free. या Exactly. Most of the reservation is just commensurate with their fraction in the population. I mean, ideally what you should say कि अगर दलित 16% है बिहार का और इतने डिसएडवांटेज्ड है, तो मे बी 30% ऑफ सीट शुड बी फॉर दलित्स, बिकॉज उनका हिस्टोरिकल इतना मार्जिनलाइजेशन हुआ है कि उनको थोड़ा ओवर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए अभी इन इंपॉर्टेंट पोजीशन, सो दैट दे कैन कम अप टू स्पीड. ये ये तो थोड़ा रेडिकल स्टेटमेंट होता, एंड दैट कैन कम अप फॉर डिबेट. बट द क्वेश्चन हियर इज कि अगर वी आर 16% ऑफ द पॉपुलेशन, व्हाई कांट दे गेट 16% ऑफ द सीट्स? वो तो बेसिक है. And they are so discriminated, disadvantaged कि at least make sure that by law that they are represented equal to their share. इतना ही है. And वो भी there's so much resentment. That's the hard bit to understand. the case was reservation was almost too straightforward. I'm again quoting from a book. Bihar had over 1 crore Dalits spread across 11387 panchayats. The deputy speaker of the Bihar State Assembly said that mere 6 of those panchayats had a Dalit Mukhiya. अब आप सोचो कि ये कैसे कैसे this is unified Bihar and Jharkhand. This is in the 80s, but Yes. 11,000 panchayats mein if you had 6 Dalit Mukhyas, and Dalits are actually 16%, whereas 6 out of 11,000 is less than 0.01%. There is clear evidence that they're massively underrepresented in government in important positions. So at least first step is to give them some representation, and that's how you bring about change. जी. एंड आप एक बहुत अच्छा उसमें भूमियार्स किस तरीके से ऑपरेस करते हैं टू फेलो दलित्स. आई फॉरगॉट व्हिच पर्टिकुलर सबकास्ट वाज इट इन दलित्स. आपको याद है क्या इसमें आपने ये वाला Was this पुलिस the कुमार? यस Mandesaram का कहानी ना? मंदेसर. हाँ हाँ, तो वो yeah, Ram is basically in Mandesar's case, he's from the Chamar caste. जी Again, Dalit. A little bit better off than the Majis in the social hierarchy. But this tells you that if a Ram caste people also can be discriminated against to such an extent, then the halat of the other caste will be much, much worse. But the description there is, there I talk about how Mandesaram is a ward member, a member of government. But उनके जो father, grandfather थे, they were all people who were working as labor on the farms of these Bhumihar landlords. जी And so the Bhumihar landlords treated them really badly. अपना shadow also cannot fall on these people. उनको चप्पल निकालना होता था इनसे बात करने के लिए. मंदेसर जी का पिता had to remove his watch. उनको अच्छा नहीं लगता है कि अगर ये लोग शर्ट पैंट पहन के घूमे. मतलब there are these, this is like another human being who is much better off, refuses to even allow you to kind of have just the basic rights that every human being in this country can have, just because you're a Dalit. I mean, that's how discrimination works. पता है मतलब शरण हमारा अपर कास्ट कितना डिल्यूजनड है. अगर आप किसी अपर कास्ट को मिलके ये स्टोरी बताओ कि मैं बिहार गया और मैंने देखा कि एक भूमियार करके एक जाति है वो उनको इस तरीके से हरास करती है,
पता है अपर कास्ट क्या बोलेगा आपको? आपको और मेरी कास्ट का, उसने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करी? है ना? Yeah, उसने 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 किसी को, या व्हाई डिड ही हायर समबडी लॉयर? उनको क्योंकि इन लोगों ने कभी पुलिस तो इनने कभी सिस्टम से डील ही नहीं करा है, और इनको पता ही नहीं है कि सिस्टम कितना ब्रूटल है टू द yeah, डिसएडवांटेज। exactly. इनको लगता है कि मतलब आप पुलिस में जाओगे, पुलिस बोलेगी हाँ जी वेरी गुड, मैं अभी आपके आपकी एफआईआर लिखता हूँ और कल हम पकड़ लेते हैं इसको। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्योंकि जब आप ये No, लिख no, रहे थे इंस्टेंसेस, the other आप example I get, and sorry for interrupting, the other या example I always get is when I say this, they're like, ये सब तो गाँव में होता है, आजकल शहर में तो ये सब नहीं होता, हम तो बहुत, and these are the same people जिनके घर में अलग सा प्लेट्स होंगे, करेक्ट। अलग सा डोर होगा, अलग सा, but ये सब तो गाँव की कहानी है हमारी, and they also, some of these things are kind of so steep, like for example, in my own family, amongst the elders, especially not now, but even like 15 years ago, I remember, कि maids को, they use the word it. They don't say she, they say it. It does not know my better. Which is such a insulting, because in the South Indian language, I think Hindi mein to there's only wo or ye, but in South Indian languages, there's he, she, and it, and they use the word it to refer to maids. It's a casting that they're napunsak. They're not even humans. Uh, so this is as stark, and this is urban, not rural. करेक्ट। यू वांट मेक टी? Yeah, I'll go make tea as well. Okay, great. Yes, I'll then pause and do remind me to resume when we come back. yes. So Done. yes, I'll just pause. Okay, great. Uh, one of the very important and surprising things in the book was you met Prashant Kishor. I am, Yes. yeah, this is so cool. And the fact that वो आपको इनवाइट करते हैं आपके ऑफिस में, आप दिल्ली जाते हैं। बाय द वे मैं भी उस ऑफिस में गया हूँ एक बार, उन्होंने कुछ Oh शो wow. करा था आज से कुछ साल पहले, यूथ इन पॉलिटिक्स करके। वो Okay. जेडीयू में शायद नए नए थे वो, दे ही वाज बेसिकली सेइंग दैट एनी यूथ हु वांट्स टू जॉइन पॉलिटिक्स दैट शुड कम इन देयर, वो सभा टाइप ही थी। हाँ, तो हाँ, वो उसका कोई टेक अवे तो था नहीं ज्यादा, बट गुड दैट ही हाँ. कीप्स ऑन डूइंग समथिंग और द अदर। अभी उन्होंने Yeah, बिहार की बात करके कुछ करा था। आई एम जनरली वेरी इंटरेस्टेड इन दैट कैरेक्टर। आई हैव yeah. ट्राइड टू गेट हिम ऑन द पॉडकास्ट आल्सो, बट वो साला बात नहीं बनी कभी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीच ऑब्वियसली, एंड तो मतलब मैं बड़ा खुश हो गया था देख के कि यार आप मिले उनसे। तो थोड़ा मुझे बताओ, आई यूज apart from the fact that you meet him in a flight and like, so he was sitting in the business class section, right? Yeah, uh, he was sitting in the and business class section, and and आप I was इकोनॉमी sitting में in. थे, हाँ, of तो course. आपको बैठने So दिया बिजनेस क्लास में नहीं for दिया, but to talk to him? Okay. the funny thing is, what they did was, what I don't know, maybe एक ही seat was taken or something, but he had two seats. So when I talked to him, I went and sat next to him only and did it. But the seat next to him was khali. That's where I sat. So I was thinking, मतलब is he big enough that he is booking two business class seats for himself कि मुझे अपने अकेले बैठना है, किसी और के साथ नहीं बैठना है? I can't tell. That's point number one. But more interesting thing about Prashant Kishore, I thought, was a very enthusiastic, very sharp. One of my favorite stories about Prashant Kishore is I was talking to the former secretary to the chief minister in Bihar, and he told me how before Prashant Kishore joined JDU, or around the time he was joining, this secretary kept telling the chief minister कि क्या मतलब ये सब क्या कर रहे हो आप इन सब के साथ? Why do you care about what in Nitish Kumar kept saying नहीं नहीं इनका policy thinking बहुत अच्छा है, इनका ability to analyze problems and provide solutions is good. He can be a good person to kind of add to our people who are thinking about the big issues in the state. So at some point, Nitish Kumar kind of gave both the secretary and Prashant Kishore's team the same task and said कि मुझे presentation चाहिए with I think some 48 hour टाइम दिया और बोला कि इस पे कोई टेक्स्ट आई फॉरगेट आई थिंक इट्स टेक्सटाइल्स है ऐसा कुछ था उस पे एक प्रेजेंटेशन चाहिए so both Prashant Kishore team and the secretary's team goes and the secretary has the data from within government. He has access to every single data source that's possible. And Kishore only has from outside government. He's still not formally with the JDU, not yet working. And he's doing some consulting with Nitish Kumar at that point. And he says that what was amazing was when they both made their presentations, he says, Dekho, Kishore's of course was much more polished, it looked better, ये सब चीजें वो तो छोड़ दो आप.
But on the sum and substance and on the conclusions, he says Prashant Kishore was about 90 to 95% similar to what I was saying. And he says, I had worked in Bihar for 10 years. I had worked with the CM's office for 7, 8 years. I had access to every single bureaucrat in that particular line department. And yet, this man from the outside was able to take that problem, summarize it, and come up with the very same broad findings that I was also kind of proposing. And he says that's what makes Kishore and his team so amazing, that they're able to kind of do analytics and analyze things and policy problems quickly. And this I saw even in my conversations with him. I think the in the book Why I did write, you? Why did he invite you to his office anyway? I just told him that I'm working on. At that time, he was the JDU and he was working with with the Nitish Kumar government. And I said, look, I'm doing research on Bihar. I have some work on reservations or yes, sir. So he said, come and see me. Tell me more about your research and stuff. And he actually moved my research in a very pivotal direction towards the stuff I write in the book about ward members and this Naljal and Aligali Yeah, yeah, Yojanas. yeah. And that was all him. He kind of just like pushed me in one direction. He said, कि आप इस पे सोचो थोड़ा. And before I could go back to him, and once I did the research, he had already left the government and he was impossible to track. But I've never met him. I sent him a tweet, a message on Twitter saying my book is out and whatever, and he wrote back saying congratulations, this is very nice to see. But otherwise, I've had no contact with him. Great. So थोड़ा आगे मूव करते हैं एंड कमिंग बैक अगेन टू संजय. तो ये हम अब कौन सी ईयर में पहुंच गए हैं शरण? विच ईयर आर वी टॉकिंग अबाउट नाउ? I would say between 2017 and 18. Okay. And what is Sanjay now? What is he thinking? What is his state of mind? You know, what are his thoughts? What are his plans? वो अभी भी और how is he making money? वो पैसे कैसे कमा रहे हैं? So this is the $1 million question, by the way. पैसे कैसे कमा रहे हैं? Because it is very hard to be not elite and an activist. करेक्ट. अगर आप एलीट हो तो फिर हाँ, तो अगर आप एलिट हो तो मतलब टेक ऑल द टॉप एक्टिविस्ट, आपके पास तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या कोई पेरेंट है जो पैसे कमा रहे हैं और आपको भेज आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या आपके ही कोई इनहेरिटेंस है जो आप यूज करके आप उसे जी रहे हो, राइट? जी. बट इफ यूर संजय सानी, you have nothing, and so your month to month becomes hard. So he's living off basically SPSS, Manrega Watch, the Sangatans he starts. They have this thing called full timers and half timers. So he's a वो तो थोड़ा फुल टाइमर का थोड़ा सैलरी लेते हैं, वो कुछ 7,000 रुपए का होता था उस टाइम पे. And then he used to do some Manrega work himself, so उससे थोड़ा पैसा मिलता था. And then he would get some of these scholarships. One of the biggest supporters has been actually Arundhati Roy's Zindabad Trust. Arundhati Roy started a trust based on all her royalty funds. She uses to fund people like Sanjay. तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. But always there is a fight. मतलब literally 1 week ago Sanjay and I are discussing उसका personal finances, because now his kids are, his daughter is 12th standard, his son 11th standard, his daughter is son is 7th standard, 8th standard, and they live in Ranchi and they're going to this reasonable school. And now he's like 11th standard के लिए ट्यूशन के लिए इतना पैसा है, स्कूल के लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा ये सब. So constantly we are talking just personal finances. Okay, so that's one aspect. And the problem also is, and here's the contradiction, and this has been deeply frustrating for me, within the activist community, the people take a great pride in saying हम न्यूनतम मजदूरी पे जीते हैं. That is, we live on minimum wage. So all these middle class to elite activists who go back to villages claim that the only salary they take is minimum wage, because we are no different from the mazdoors we are working for. So Sanjay ji ka very clearly he told me one day, he told me, Sharan ji, न्यूनतम मजदूरी पे सिर्फ मध्यम वर्ग के लोग जी सकते हैं. ओनली द मिडिल क्लास कैन लिव ऑन मिनिमम वेज. हमारे जैसे गरीब लोग न्यूनतम ऑन मिनिमम वेज वी कैन नॉट लिव, बिकॉज if you're middle class, like I told you, you have all these other sources of income, so you take minimum wage salary, you can still live. It's like मेरे से नहीं होता है, right? And this is the problem with the activist community, because they have made these rules and norms based on assuming that everyone who runs a Sangathan is has some other source of income, but someone like Sanjay, whose only thing is to do this, finds it hard.
Okay, Hmm. so that's the whole wage situation. But on the work front, he's still expanding to villages, but slowly he's getting frustrated. He's feeling like, कहाँ जा रहा है? Where is my life going? What am I doing? I am always fighting the same struggles. I'm stuck in this kind of rinse repeat mode. I need to do something different. And he's slowly pivoting into a direction where he's thinking maybe I should contest elections. So विल that's कम where, टू दैट, विल कम टू yeah. दैट, होल्ड दैट थॉट। मुझे एक बात बताओ, आप अपना एक चैप्टर है जिसमें आप स्टेट और उसकी एपैथी की बात करते हो, और आप हाँ, सडनली आप बताते हो कि कैसे बिहार का एक थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेटिव एक आ जाता है, एक बेसिकली आई एम फॉरगेटिंग द नेम, आई थिंक बीआरपीएस इज वाज इट कॉल्ड, आई एम ट्राइंग टू स्क्रॉल माय BPGRA. बुक। Yeah. करेक्ट, Bihar विद Public Grievances Act. पब्लिक Yes. ग्रीवेंसेस। सो ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे ऐसा लगा कि ये काफी, जैसे आपसे आपने डिफाइन करा कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, लोग सुन सकते थे, ग्रीवियंस ऑफिसर। और मेरे को मेरा एक पॉलिसी का, एक मेरा स्कूल का एक वो भी याद आ गया ऑनेस्टली, जिसमें मेरे को बोला गया था कि एक मैंने कोर्स करा था, तो उसमें Hmm. बोला गया था कि तुम कोई पॉलिसी अगर डिजाइन करते हो, ठीक है, फिर तो मतलब बेसिकली तुम स्टेट को इन्वॉल्व कर रहे हो एक किसी काम करने के लिए, फिर तुम उसको उसका चेक एंड बैलेंस लगाने के लिए फिर एक फंक्शन बनाओगे जस्ट टू चेक कि द स्टेट इज वर्किंग। तो, Yes. तो मुझे वो चीज एकदम याद आ गई कि हाँ यार, ये मेरे को बताया था, बट हाँ, यार इट इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। मतलब तुम क्या करोगे, वी कैन नॉट लेट गो ऑफ द बिग स्टेट, राइट? अभी वो है तो है, तो उसमें ये yeah, सब एक मैकेनिज्म बनाओगे, फिर उसमें लीकेज होगा, तो उसको करने के लिए एक अलग एक टीम बनाओगे। तो हाँ, बट हाँ, हाउ exactly. डिड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई मीन, मुझे तो नीतीश कुमार के लिए इज्जत बढ़ गई थी, मतलब ये सब चीजें सुन के, नल जल योजना और ये नली गली योजना और ये सब देख के, और स्पेशली दिस वन एज वेल। So this is actually a pretty amazing act, and the origin of this grievance redressal act is basically Janta Darbars. So Nitish Kumar, in the rich tradition of leaders from the heartland, always had a day in the week where his doors were open कि कोई जिसको अपना शिकायत जो भी शिकायत है, any grievance you have, you can come and tell me. And he said, not only will I do it, every MLA will do it, and every district magistrate will do it. That was a करेक्ट। rule he had. प्रॉब्लम इसके साथ ये था कि जब लोग शिकायत आके करते थे तो उसका फॉलो अप मैकेनिज्म वाज नॉट गुड। नीतीश कुमार टेल इस ब्यूरोक्रेट की इसने आके ये बोला, इसका चेक कर लेना, बट उसके बाद क्या हुआ, कहाँ गया वो चेक, मतलब वाज दैट एक्चुअली डिलीवर्ड और नॉट? तो ये सब चीजें वाज नॉट बीइंग फॉलोड थ्रू, फॉलोड थ्रू। सो व्हाट ही सेड वाज कि व्हाई डोंट वी बिल्ड अ फुल स्ट्रक्चर, अ ग्रीवेंस रिड्यूसल स्ट्रक्चर, जहां पे कोई भी आके हमारा एक ग्रीवेंस ऑफिसर को कंप्लेन कर सकते हैं। देयर इज वन ऑफिसर फॉर एवरी 80 पंचायत्स। यू गो टू दैट ऑफिसर एंड यू से भाई दिस इज माय प्रॉब्लम। दैट ऑफिसर विल देन कॉल यू फॉर अ सुनवाई, where it's not just you and him, but it's also the bureaucrat who's responsible for getting your work done. तीन लोग आप आके बैठेंगे, आप देखेंगे प्रॉब्लम क्या है, ऑफिसर विल से कि अरे यार तुमने काम नहीं किया, ये कर दो, एक हफ्ते बाद एक और सुनवाई होगी या 3 हफ्ते बाद एक और सुनवाई होगी, उस पे मुझे आई वांट यू टू टेल मी यू हैव डन द वर्क, देन आई विल पास माय ऑर्डर से दिस हैज बीन डन। दैट वाज द स्ट्रक्चर दैट नीतीश कुमार सेट अप। He picked 100 of his best Bihar Administrative Services officers and sent them out to the subdivisions and said तुम सब लोग grievance officer बनोगे अब, and ऐसे एक स्ट्रक्चर बना दिया। ये 2016 में लॉन्च हुआ, and I think 18 में हमने एक सर्वे किया and we saw that for every 100 complaints about 33 were being resolved. एंड आपको लगेगा कि यार ये बहुत कम है कि 100 में से 33, तो मतलब हमारे एग्जाम में पास मार्क ही 35 होता है, तो ये 33 क्या है? बट एक्चुअली 33 इज वेरी हाई इफ यू लुक एट अ सिस्टम लाइक दिस, कि इवन 5 इज हाई। मतलब यूजुअली तो कंप्लेंट रेजोल्यूशन गवर्नमेंट के साथ तो बहुत मुश्किल है काइंड ऑफ टू डू इट इन दिस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैनर। द फैक्ट दैट ही वाज पुलिंग इट ऑफ एट स्केल because they had got almost 5 lakh complaints when I started working on it in 2018. So 2 साल में 5 लाख कंप्लेंट आ गए, 2 ढाई साल में, एंड अभी तो एक 10 लाख कंप्लेंट तक आ गए। And all these complaints had some procedure where there was a hearing, there was an order, and about 33% were being resolved. So it was a pretty big move. And just to give you a sense, people were complaining about everything from land, कि मेरे जमीन का डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, या कोई आके मेरा जमीन को कब्जा कर दिया, टू मेरे घर का जो इंस्टॉलमेंट, जो इंदिरा आवास योजना में मेरा 20,000 रुपीज आना है वो नहीं आया, या मेरा पेंशन स्कीम में मेरा आधार लिंकेज जो है वो गलत हो गया है। तो यू टेक द रेंज, every kind of complaint across 44 different departments you could complain, and the government was listening to the complaints and trying to solve them.
So this was a very landmark move, a very big decision, and very unique institution that started first in Bihar. सेगवे, हाउ डू यू, जिस जितना मैंने नीतीश कुमार के मतलब आपके क्लोजली पढ़ा, मेरे को उतना हाँ पता नहीं था उनके बारे में हाँ ऑनेस्टली. हाँ. एंड देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू लाइक हिम, बट देन ही अलाइड विद बीजेपी, सो आई वाज लाइक यार ये Yes. थोड़ा Yes. Yeah. इट्स गोइंग नोवेयर. ऑल ऑफ दैट वाज हैपनिंग, बट ये पढ़ के मतलब व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ नीतीश? एंड ऑब्वियसली नीतीश, एंड यू आल्सो मेंशन इन पॉइंट कि जब यादव का रूल्स आता है तो वी सी दैट ऑन द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़ जाता है, बट वो डेवलपमेंट के कॉस्ट पे आता है. नीतीश Right. का कुछ एक अलग थॉट रहता है. सो जस्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड ये दोनों कैसे रहे, आपका ऑब्जेक्टिव इफ पॉसिबल अनबायस्ड व्यू पॉइंट क्या है? So okay, so on Lalu, I'll give you the my favorite thesis on him, which is like what you are saying, कि जब लालू आए तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को डिसमेंटल किया. जो झा, राय, जो मैथिली ब्राह्मण्स हु वर डोमिनेटिंग द ब्यूरोक्रेसी, उन सबको हटा दिया. बोला कि सस्पेंड किया, निकाल दिया. रिटायर हुए तो भरे नहीं पोजीशंस को, उनका जो पैसे मिलने वाला था नहीं दिए, लोग भाग गए. जब ये लोग भाग गए तो एक वैक्यूम बन गया कि जब गरीब मजदूर को कोई प्रॉब्लम है तो ब्यूरोक्रेसी में कोई नहीं है, डीएम नहीं है, कोई नहीं है जिनसे हम बात कर सकते हैं. तो कहाँ गए वो लोग गए अपने पॉलिटिशियन के पास. कौन था पॉलिटिशियन? यादव, मुसलमान, जो बैकवर्ड कास्ट से आए थे, जो दबे हुए थे समाज में, वो सब पॉलिटिशियन थे. और उनका पावर बढ़ गया क्योंकि ये जो वैक्यूम बना था, जो अपर कास्ट वैक्यूम, वो पॉलिटिशियन थे, दे स्टार्टेड फिलिंग इट अप. दैट इज गुड. दैट चर्निंग वाज इंपॉर्टेंट. बिहार नीडेड इट इन द 90s, स्पेशली 91 में जब लालू आए. वाज अ ग्रेट टाइम to do it. The problem is, and I love this phrase, Roshan Kishor, the journalist, described it recently. He said, Lalu is the chemotherapy that Bihar needed, but it went on for too long. And I think it was a very good phrase. कि ये सच है कि बहुत अच्छा काम किया है, but I think he just kept doing this. He didn't have anything else. See, when you dismantle the bureaucracy in the short run, you're empowering politicians. But you bureaucrats are the people who implement things. आपके पास अगर कोई नहीं है जो बजट बनाता है, जो स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है, तो आपका स्टेट लॉ एंड ऑर्डर, जीडीपी, सब कुछ गिरेगा. और वो गिर गया. राइट. सो दैट इज द टेक ऑन लालू. What did Nitish do? Nitish comes in and Nitish is like, okay, we need to first establish some semblance of law and order. That's number one. We also need to kind of distribute power more formally. जो लालू का पावर डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक था वो इनफॉर्मल था. पॉलिटिशियन को एम्पावर किया कैसे? इसको डिस्ट्रॉय करके. बट ऑन पेपर there was no extra reservation, there was none of that stuff, there was no explicit government policy that was systematically being followed through, partly because Lalu had no government to follow through on anything. But Nitish decided कि नहीं, हम ईबीसी के लिए 20% रिजर्वेशन देंगे, दलित के लिए 16%, पंचायत में देंगे, गवर्नमेंट जॉब्स में देंगे, महिला के लिए 50% हम देंगे. और पूरा रिजर्वेशन करके that was his way of bringing about social churning, which was different from Lalu. It was a more structured, through the bureaucracy, through the government kind of way of doing it. And I think the cynical view of this also is that, as I said earlier, Nitish wanted some kind of a caste group that will back him, some kind of a constituency that will back him. Mahila will back him if he has reservation for women, bans तो alcohol, साइकिल दो all उनको, साइकिल वाइकल एंड cycle. ऑल ऑफ दैट. Exactly. So for have policies where you create a constituency that will be all loyal to you, because that was always his worry कि he doesn't have a big enough caste base. So this was his way. EBC का एक ग्रुप बनाओ जो नहीं था पहले, एक अलग सा कैटेगरी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट बना के उसमें सबको डाल दो, ताकि वो लोग सब फिर तुम पे, मतलब आप पे थोड़ा निर्भर हो, और दिल कमेंट से कि ठीक है आपने इतना किया हमारे लिए तो हम वोट देंगे. सो दिस इज बेसिकली व्हाट ही डिड. Now, I think that Nitish Kumar's primary contribution to Bihar has been law and order and establishment of government structure and social churning done formally through reservation and policies that are more pro disadvantaged caste groups. The problem with Nitish Kumar right now, he's not a chemotherapy, but he's out of ideas. I think it's been a while, especially since I think 2019, 3 साल हो गए. I haven't seen a good, structured policy that Nitish Kumar has come up with that I found like, oh, this is new, this is interesting. Because Bihar ka fundamental structural problem, I think, is also that, like you were saying earlier, industry nahi hai. Someone has to figure out कि industry नहीं है, higher education systems collapse हो रहे हैं, तो services भी नहीं है. जब तक इंडस्ट्री और सर्विसेज नहीं हो तो कहाँ से आपको ग्रोथ आएगा? एग्रीकल्चर पे ही ग्रोथ नहीं आ सकता है.
So he has to do something to either get investments for industries or improve services. But for services, you have to improve your colleges. You have a lot of youth. Actually, democratic dividend is great, but they are being trained so poorly that they can't do a single important service thing that they can do. So that is, I think, my take on Nitish. Hmm. लेट्स मूव टू द जब आपका स्टोरी एक फाइनली एक इंटरेस्टिंग टर्न ले लेता है एंड संजय डिसाइड करते हैं कि यार अब मौका आ गया है मतलब एंड मैं संजय की शुरू से कहानी से मैं ये सोच रहा हूँ मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ एज अ रीडर कि संजय अब लड़ेंगे अब लड़ेंगे अब लड़ेंगे क्योंकि वो नेचुरल प्रोग्रेशन दिख रहा है आपको हाँ, राइट एंड हाँ, मतलब अगर आप भी कल को आप पॉलिटिक्स में जाते हो तो वो सबसे फर्स्ट चीज आपको जो प्रिंसिपली बोली जाती है कि लोगों के पास जाओ पहले एक्टिविज्म करो बेसिक उनके मुद्दे सॉल्व करो नेचुरली तो पॉलिटिशियन बन जाओगे एंड आई थिंक दैट्स व्हाट यू नो मोस्ट ऑफ द नॉन पॉलिटिशियंस ऑफ द कंट्री समहाउ स्टार्ट right. so you see that यार he is on that track and finally एक point आता है where and it is very interesting and I think I would like to just quote that just allow me a Sure. second Yeah, yeah, sure. where he basically says to you कि भाई हम लड़ेंगे right Hmm. and what triggers him उनको क्या ट्रिगर करता है कि और ऐसा नहीं कि पंचायत लड़ेंगे वो एमएलए लड़ना चाहते हैं सीधा तो मतलब ये भी बड़ा सरप्राइजिंग था कि ये कहाँ से आया नॉट दैट ही इज नॉट ऐसा नहीं कि वो गलत है एम्बिशियस होना बट आप वो ये कनेक्शन मैं बना नहीं पा रहा था So I think one of the big reasons, which I actually forgot to mention earlier in the conversation, was that there was a lot of uh, FIRs and state-based repression that he was facing, not just him, but many other people in the Sangathan. And constantly court में भागना, ये करना, वो करना, पुलिस का केस हो गया. And he has had some 6 or 9 FIRs now against him as of today. सिक्स आपने बताया था याद 6 in मुझे the book, and I think 2 more after that. So basically, he's just been like struggling with a lot of this, and not just him. There are also Mahila Mazdoors who have those problems and stuff. एंड सब फर्जी This एफआईआर राइट लाइक ऑल सब आर फेक फर्जी, सब मतलब हाँ, all fake. क्या क्या कहानियां है, टॉक अबाउट देम इन द बुक कि जब संजय थे ही नहीं पटना में, तो बोला बिहार कि में. शर्ट पर मार दिया हाँ, शर्ट उतार के किसी को मार दिया, मतलब the things that Sanjay is supposed to be done sitting in Ranchi but doing it in Muzaffarpur are amazing. So, right. So this is like a Superman ability he has. Now, I think that was partly frustrating. The other frustration I think comes from the fact that you're in the same, like I said, rinse, wash, repeat mode. कि वही चीजें कर रहे हो आप, but next step क्या है इसका? That was not clear. And I think at some point he says maybe the next step is we need someone like me, but to be inside government, because only from within government can we kind of bring about sustainable change. By sitting on the outside and putting pressure on government, we're always going to be stuck because there are people within government who are not like us. They're not Mazdoors. They're always people who are more elite. So maybe someone like me should be in government. So that's the thinking that kind of inspired. So it's a combination of frustration with the court cases and frustration with the work and the way it's progressing. एंड व्हाट्स योर आपका रिएक्शन क्या रहता है जब द मोमेंट संजय टेल्स यू दिस My original reaction was, have you thought about it? What is your, like, which way do you want to go? It's a very hard to win elections, and it's not at all easy. Most people don't win. I also actually, the other question I asked him was, have you spoke to Nikhil Day and John Drez, because they were these other people he would talk to all the time. So मेरा दूसरा सवाल यही था कि क्या बात किया या नहीं उनसे. And in the beginning Sanjay was like, हाँ मतलब हम बात किए हैं, हम सोच रहे हैं ये सब. But my first reaction was a bit of skepticism कि ये पता नहीं कहाँ जाएगा. एंड आपका मैंने एक पूरा बहुत लंबा सा पैराग्राफ मैंने Hmm. हाईलाइट कर रखा था एंड मैं उसको पढ़ना चाहूंगा they wanted more. The Mazdoors wanted to state to change its way to not merely listen and make small amends, but show remorse and redeem itself. They did not simply want the NREGA to function such that the Mazdoor got some work. They wanted full 100 days of work on demand and in employment benefits if they were denied such work. They were not satisfied with roads being built in their villages. They sent teams of women Mazdoors out armed, glasses of sattu juice to stand in the searing heat and monitor how these roads were being constructed, what kind of material was being used, whether the labor was locally hired or not. The Mazdoors and Sanjay Sahini himself had begun to realize that the avenues for change they pursued was simply too narrow to accommodate their breadth of their dreams.
So this is a more poetic way of saying they were very frustrated, but that was basically the point. Yeah, yeah. कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पे हमको we dream so many things but we're not getting there. Hmm. Correct. And so And yeah, and फिर वो कहानी शुरू हो जाती है. And I think let's get into this. So 2020, Sanjay Sahini says भाई MLA बनना है. मतलब 2020 elections are 1.5 years away. So this is 2018, if I'm not wrong. now this is 2018, 2019. Yeah, that's when Yeah. he starts. So I so think it was, yeah, 2019 July. Exactly. एंड ये संगठन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका. एंड ओवरऑल दीज आर लाइक स्नोबॉल इफेक्ट्स, राइट. लाइक आपको भी नहीं पता होता है कि इसका वाइडर इम्पैक्ट क्या हो सकता है. एंड क्या संगठन का पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है इन द सेंस कि डिप्रायोरिटाइज हो जाता है कुछ काम. एंड ओवरऑल हाउ दिस पैन्स आउट इन द स्पेस ही इज इन. So one of the things I did not anticipate going into this was what effects will it have on the Sangathan. एंड यू आर इन यूएस बाय द टाइम. I'm in the US by this time. I was there for the first set of meetings. I described that in the book where या जहाँ पे पहले जाता है बोलता है कि मैं जाना चाहता हूँ अंदर, man on the inside. I want to be that man on the inside ऐसे बोल के he goes to many places and makes the pitch. But one of the things I didn't anticipate at all about Sangatans, about the campaign was Sangathan actually now, today, is much more popular only because Sanjay ran for the election. इलेक्शन. ओ. So वो एक अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस है बिकॉज उस टाइम हाँ. पे मैं एक्चुअली डिस्करेज कर रहा था. मैंने बोला ये सब क्या करो, इट विल डिस्ट्रैक्ट अवे फ्रॉम द संगठन. Unintended consequence, as they say in, yeah, Exactly. policy. Yeah, So yeah. yeah. So this is something that he definitely has benefited. He's more popular in his panchayat. He's even more popular now. Because MLA में even if you lose but you are kind of a potential candidate, you come in the top 4 5, you are still seen as a important person. And मुझे actually ये याद है कि the amazing thing about Sanjay, this is kind of a segue, is that even like 2 3 years before, say 16 17 में जब मैं गया था पंचायत में, Sanjay and I used to walk, and he would take his hand and put, if he was walking on the road and people were coming, he would put his hand on his chest and say ठीक है ऐसे कोई किसी को भी देख के he would say, I used to make fun of him. I was like, क्या कैसे करते हो, नेता की तरह करते हो आपके यहाँ से हाथ रखे, ठीक है ऐसे बोलते हो कि आप ठीक हो मैं ठीक हूँ टाइप्स, ये बोल रहे हो. तो मैंने कहा सब जो भी रास्ते में जा रहे हैं सबको जाके आप ऐसे करते हो ठीक है बोलते रहे, तो आप तो बिल्कुल नेता बन गए. एंड ही यूज्ड टू से कि नहीं हम कभी नहीं बनेंगे नेता सरन जी, हम तो नहीं नेता है ये सब. ही हैड द स्टैंडर्ड स्पील. And then now to see him kind of totally throw his weight behind the campaign, was actually very fascinating to see. And the saddest part for me personally was pandemic and my inability to travel to India because I didn't have a visa. So I didn't have a visa appointment. So I saw the whole experience from remotely, either through videos, photo campaigns, photographs, or through talking to Sanjay and all the other activists who kind of participated. But it was an incredible campaign because it was completely run by a bunch of Mahila Mazdoors and some men workers also, and Sanjay Sahini on a super shoestring budget. The amount of money they spent on campaigns, on posters, पैदल जा रहे हैं, गांव पैदल जा रहे हैं, साइकिल में जा रहे हैं. मतलब it was not like the typical लाउड स्पीकर लेके बड़ा बड़ा वैन में जा रहे हैं, गाड़ियां वाड़ियां चल रहे, कुछ नहीं है. मतलब all of it was done. Most of it was walking. Very little towards the end was some use of vehicles, but it was a completely different campaign, completely volunteer driven. And it was actually fascinating to kind of even see from the distance. And I think आपका शायद I think this also one conversation I think you have with Mandeshwari Devi, where you ask हाँ her that आपको क्या लगता है कि संजय जीतेंगे, और वो बहुत हाँ. ही एक क्या जवाब देती है आपको. So actually, I think it was Indu Devi, but the conversation is that so मैंने उनको मैथ समझाया कि ये बहुत लो प्रोबेबिलिटी इवेंट है. दैट्स बेसिकली व्हाट आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू हर, बट इन वेरी कॉमन लैंग्वेज. कि मैंने बोला कि देखो आपको जीतने के लिए आई थिंक 70,000 वोट ऐसा कुछ चाहिए. कहाँ से आएगा, 80,000 वोट चाहिए, ये तो कहाँ से आएगा. सो शी लाइक संगठन के सारे मजदूर है, हम सारे मजदूर वोट देंगे उनको. तो मैंने बोला ठीक है 10,000 मजदूर है, सब देंगे वोट, तो फिर भी तो आपको 70,000 और वोट चाहिए, तो कहाँ से आएगा. देन शी इज लाइक हाँ लेकिन हम उनके परिवार को भी बोलेंगे, मजदूर के परिवार में भी और भी लोग होंगे. मैंने कहा ठीक है एक दो और लोग होंगे, तो देखो 20 25 30 हजार तक मिल सकता है आपको, और आपको 50 40 50 हजार वोट चाहिए, कहाँ से मिलेगा.
And then for a second, she's like completely like blank. And I thought, ki, oh my God, I finally kind of communicated to her the enormity of the task, that it's now dawning on her ki ab hum, we are going to fight this monster and we don't know how to do it. But then she just flips and she says, नहीं नहीं हम जीतेंगे, हम करेंगे ना, सब करेंगे, हम सब जाएंगे, सब हर घर में जाएंगे करके we'll win. Like this kind of delusion, which I refer to earlier in this conversation and a couple of times in the book, कि I think जिस काम में ये लोग है, which is in the business of trying to make things work for you when everything is against you, उस टाइप के काम में अगर आपको हौसला बढ़ाना है, आपको ये करना है, कुछ भी करना है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली चीजें बिलीव करते हो जो आपको मेंटल स्टेबिलिटी को थोड़ा रखे. एंड यू विल थिंक दैट संजय सानी कैन विन इलेक्शंस. वो 40,000 वोटी है, हम जीत लेंगे उसको. देयर इज दैट काइंड ऑफ ability for the human brain to believe in some crazy dream to keep itself going, and it's, I think, important, and that's basically what I saw in करेक्ट. एंड ये अपनी मूवी में बहुत अच्छा सीन बनेगा था. I never thought of myself as a character in the movie. Now you have changed. यस. एंड आई थिंक आप बोलते भी हो कि यार देखो, तीन टाइप के लोग होते हैं जो बहुत डिसएडवांटेज के साथ शुरू होते हैं. एक Hmm. गरीब होता है, एक विदाउट पार्टी सपोर्ट होता है, और एक फर्स्ट टाइमर होता है. और संजय तीनों था. Ah, right. So हाँ, it was just, yeah, it was like Zimbabwe playing against India. I mean, it was always a very low probability event. करेक्ट. एंड इस पूरे पूरे जो सफर में आपने थोड़ा आप मेंशन भी कर रहे हो अभी कि एफआईआर बहुत हो जाते हैं. थोड़ा सा आप बताओ कि संजय ने अभी बहुत एनिमीज बना दिए. लाइक उसके हाँ. एनिमी चारों तरफ है, राइट? एंड द स्टेट इज लाइक, आई थिंक इफ इट इज सेफ टू से कि स्टेट हेट्स इट. लाइक चाहे वो हाँ. आपका एसडीए हो या पंचायत हो. एंड एंड आई थिंक आप एक पॉइंट पे बोलते भी हो कि एसडीओ तो बहुत ऊपर होता है. Hmm. वो तक उसको बोलता है कि यार ये साला ये बकवास आदमी है, ऑल ऑफ दैट. सो एंड या थोड़ा सा इस पे बताओ आप. So basically क्या होता है ना कि कहानियां तो फैलते हैं स्टेट के अंदर भी. If I am जी. a government officer, I hear stories about everyone that's happening. So an SDO is basically 80 पंचायत. अब हम्म. आपके हर 80 पंचायत के हर आदमी के बारे में आप नहीं जान सकते हो खुद जाके, तो आपको कहीं से करेक्ट. कहानी आता है कि कोई आके बोलता है सर हम सेक्रेटरी उस पंचायत का है, वहां पे एक एक्टिविस्ट खुद को एक्टिविस्ट बोलता है, बट एक्चुअली वो चोर आदमी है, वो बिचौलिया है, हाँ. वो जो भी है, और वो ये सब करता है. So that is how the SDO also got to hear about Sanjay. And she was like, oh, he's just a fraud, right? And that is true for the whole, everything below the SDO and some people above also. So Sanjay's only actually supporters were people who were either, in Patna, who were too far away from the local stories, who were the secretary level look, or like people in civil society and outside. But within government, the story was Sanjay was a bad influence on the Mazdoors and was kind of spoiling relations between the poor and the government. एंड ये हर जगह बोलते, आई मीन इट वाज अमेजिंग कि तुम, एंड all these officers think that they know what is best for the poor, and every poor person says none of these officers do what we want them to. So it's amazing that dichotomy where on the one hand you think मैं सबसे बढ़िया, मैं सबसे ईमानदार, मैं सबसे अमेजिंग ऑफिसर, and on the other hand हर गरीब मजदूर बोलते हैं ये सब लोग दे बिके हुए हैं, वो लोग कुछ काम नहीं करते. So that was the problem Sanjay faced, and I think that what basically the way the state kind of reacted to the problem Sanjay was creating for them was by filing case after case after case. So that's what was going एंड संजय का बजट क्या रहता है पूरे इलेक्शन में? आपने बताया कि वो शू स्ट्रिंग रहता है, फिर भी इफ यू कैन थ्रो सम नंबर्स. on. I think I have it in the book, but my memory for everything put together was roughly between 7 and 10 lakhs was हाँ, for 10 an lakhs तो MLA. आई थिंक वो आपके ऑनलाइन कैंपेन से रेज हो जाते हैं. Huh. Uh, And I think basically that, and maybe I forget what the exact number is. I think it's in the book, but basically, if I remember this, that it's not even half of what the official allowed budget is. So, आई नो. मतलब I forget what that number is, and nobody spends anywhere close to that number. They usually spend like 3-4 times the official limit, and yeah, not even आई half. कुड बी रॉन्ग बट आई रेड दिस समवेयर Huh. कि एमएलए का जो एक इलेक्शन रहता है उसका एक्सपेंडिचर ऑन अ मेजर पार्टी शायद 3 से 5 करोड़ के बीच होता है.
which is Uh, very likely. I think that's right, and I think it's, I would say it's closer to 5 crores than 3 crores yeah, yeah, because, yeah. huh, go on, what? इट्स $1 million बेसिकली, $1 million तक नंबर मैंने सुना था, हाँ. Exactly. And because बिहार के मुखिया के पंचायत में what we are seeing is कि the average guy spends between 5 and 10 lakhs मुखिया के लिए, मतलब, एंड दैट इज एवरेज. बड़े बड़े मुखिया लोग तो 25 30, मतलब वी हैव हर्ड स्टोरीज ऑफ अप टू 1 crore, बट देयर मस्ट बी एक्सट्रीम इवेंट्स. बट हर घर को तो थोड़ा बहुत तो 50 रुपए 100 रुपए तो हर आदमी देता है. और अगर आप 250 2,500 घर में 100 रुपए देंगे तो आप 2.5 लाख तो वैसे ही पहुंच गए हो. उसके बाद आप बाकी सब करते हो. सो 5 crores is nothing. I mean, it's exactly what they should be spending to be MLA. करेक्ट. एंड आपका कॉन्वर्जेशन भी मतलब काफी थोड़ा सा विद संजय, आप बताते हो कि अभी व्हाट्सएप में constantly there is a message on 29 June, 22 July, 27 August, 27 October, and more or less the message says कि सरन जी प्लीज पैसे का कुछ पता कीजिए, कुछ फंड रेज कीजिए. एंड as 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 a rationalist, as a practical person, Right. who understands what will be the outcome of the election, uh, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? How do you deal with this? यार, Sanjay is now, a brother, a friend, comparated. You have had spent so much time, and he's fighting this important battle. और जहाँ पे आपको भी पता है कि इसका आउटकम मोर और लेस फ्रॉम अ विन और लूज स्टैंड पॉइंट से मोर और लेस क्या होने वाला है. एंड देन ही इज रिक्वेस्टिंग कि यार किस तरीके से हम पैसे अरेंज करें. सो हाउ आर यू, लाइक एज एन इंडिविजुअल, लुकिंग एट दिस सिचुएशन? So मुझे बहुत क्लियरली याद है एक, my wife and I had a huge argument. We were staying with a couple of friends at that time, so we were all having lunch together. इसी बिल्डिंग में जहाँ पे मैं हूँ, इसी अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर में वो लोग रहते हैं. तो हम उनके घर में पहले जब हम when we came to DC we were staying with them, and so we were having lunch at their house. And ये पैसे का चल रहा था, फंड रेजिंग. सो आई वाज लाइक, शी वाज लाइक, क्या तुमको क्या लगता है कि जीतेगा या नहीं? मैंने बोला नहीं जीतेगा. सो देन शी इज लाइक, तुम फिर फंड रेजिंग क्यों कर रहे हो? व्हाई आर यू आस्किंग पीपल फॉर मनी? आई वाज लाइक, नहीं, वो कैंपेन इज वर्थ still supporting. There's a small chance. Then she's like, then we were talking about, so I know Ram Guha, the historian, reasonably well. क्या So बात I है. was like, so I was like, chalo Ram Guha ko, see, one of the people, like, we were trying to figure out who can I ask money for. And I said, people like Ram Guha and all, I won't ask money. हाउ So डू यू she नो said, हिम, इफ आई मे आस्क? oh, so the same summer that I did fieldwork in Karnataka for a month and a half, I also spent, it was a 2.5 month summer break, I think, 3 month summer break. So I think roughly half kiya maine, half Karnataka mein fieldwork, and then half the time I spent working with Ram Guha on his Gandhi biography. So if you look at the Gandhi biography, one of the acknowledgements is me. So I क्या did बात है. तो ये बहुत मतलब बहुत पुराना कहानी है, बट बेसिकली I it was okay. Let me tell you 1 minute of this. It was the most incredible time I've done spending research. He gave me this task. He said, "आपको 1947 के newspapers पढ़ना चाहिए. Around the time, I want to know from August to end of September when Gandhi arrives in Delhi. You have to read every single newspaper. He had some 3 4 newspapers which has these in microfilms. एक microfilm machine होता है नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में. तो उस मशीन में ऐसे रोल करके वो पेपर आएगा, वो पेपर देखो, एंड आई टू मेक नोट्स कि लोग क्या बोल रहे हैं गांधी के बारे में, what where he is, what he's doing. So I basically read 3 4 newspapers and made notes for him. And I learned so much about, because I had so much fun reading old newspapers. कि I would basically, it was a portal into an alternate world. कि आप जाओ बैठो पढ़ना शुरू करो. तो मैं क्रिकेट मैच फॉलो कर रहा था स्पोर्ट्स पेजेस पे कि आज ये हुआ, कि कल क्या होगा इस मैच में, एड्स देख रहा था. सो इट वाज लाइक एन अमेजिंग एक्सपीरियंस विद राम गुहा वर्किंग ऑन रिसर्च. And we did that. Then we did the India China war. So another book, I forget what the book, it's a collection of essays, usme bhi I'm acknowledged. And then briefly we were updating India after Gandhi, and I did some work on that too for him. So I spent almost a year working off and on with him, and I'm just fascinated by modern Indian history. So that was basically where all this comes from. But yeah, but it was great fun. I mean, it's one of my favorite research experiences. Um, but to come back to this, so my wife and I, the argument we had was, yeah, she's like, why won't you write to Ram Guha, but you'll write to your friends, you'll write to everybody. So I was like, देखो भाई, मुझे लगता है कि जब कोई serious chance of winning होगा,
तब आई विल टैप इनटू द बिग गन्स. तब तक मैं नहीं करूंगा. मतलब मैं राम गौर को लिख के, मतलब क्योंकि मेरा भी एक रेपुटेशनल कॉस्ट है. कोई भी रैंक, मतलब लूजिंग कैंपेन में जाके मैं इतना. And she was like, there's something fundamentally wrong with the way you're thinking about this, ki if you think there is a positive chance of winning, you should go all in. You should really help, and you should not say कि मैं इससे पूछूंगा लेकिन उससे नहीं पूछूंगा. But somehow the rationalist view, like you're saying, in my mind was, depending on the probability of victory, I will invest, I will raise funds. If the probability is higher, it gets higher and higher, then I will raise more and more funds. But if my numbers are saying low probability event, I will save the big guns for a future election campaign. Your And wife that's was, if I may just make a small thing, yeah, your wife was thinking like a true activist, and you were thinking like, you know, like somebody who was managing a household or things like that. exactly. नहीं नहीं, because see her point was कि तुम आइदर तुम बोलो कि ये नहीं हो रहा है, ये जीती नहीं है, तुम मत रेस करो पैसे, या तुम करो फिर से ठीक से. तुम ये बीच वाला का क्या रास्ता पकड़ के बैठे हो. दैट वाज बेसिकली हर आर्गुमेंट. सो Correct. एनीवे. Hmm. Huh. And I think I, if you ask me, uh, मेरे ख्याल से हमें शायद एज डोनर्स ऑल्सो, अगर हम कभी डोनेट करें तो शायद हमें ये इक्वेशन से हटा देना चाहिए कि वो जीत रहा है या हार रहा है. आपको वो बिलीफ रखना चाहिए उसके कॉज पे और वो जो मुद्दा उठा रहा है. इलेक्टोरल विन, विक्ट्री या नहीं विक्ट्री, तो इज जस्ट वन पार्ट, राइट? एंड लाइक यू सेड, राइट, द संगठन बिकेम मोर पॉपुलर, देयर आर अदर या विक्ट्रीज दैट फॉलोड. या So या yeah, some take away from me I, and I others, think but you and my wife will get along really well, basically. That's what. right, so, yes, yes, but yeah, please carry on. So ये तो हो ही रहा था. So funding was a problem. Constantly we were raising money. One of my other favorite things about that campaign was कि कितने बच्चे गए, students गए, volunteers गए, पूरे इंडिया से गए. From Hyderabad, from Assam, from Delhi, from Rajasthan. मतलब हाँ, लोग just वो descended. भी कैसे हो रहा? How did that happen? So I think part of it is genres. I think a lot of it is genres. Genres is this economist, as you already know. And I think, very hard to get on a podcast, but if you can try and get him, he's an amazing guy to talk to. I think he's If a. you can, and if you can, I can yeah. actually ask. Oh, you should talk about this afterwards. But I can actually ask him. I think that his is a life. Just one, two sentences on genres. His is a life that is impossible to emulate, but demands documenting. And he is too humble to document his life. तो वो कभी नहीं बताएंगे. तो हम सबका काम होता है as people who study economics development in India, to somebody should sit together and kind of do, like, document his story, why he's here, what he does. Anyway, John is amazing economist, lives in Ranchi, knows Sanjay Sahini really well, decides to throw his weight behind the campaign. He throws his weight in two, three ways. First, he always runs a summer survey. In fact, people like my wife, their first experience of rural India was as a student in 2006 studying NREGA for Jean and Ritika. So Jean Rez and Ritika Khera run this great summer surveys. And so generations of students have done it. So Jean has a mailing list. उनको पता होता है कैसे contact करना है students. He used that to say Sanjay Sahini is contesting. It's a great campaign. Please come and join. Jean ने बुलाए तो of course लोग आए. ऐसे नहीं कि नहीं हो सकता है कि नहीं आए. Number one. Number two, Jean wanted to raise money. तो वो भी वो किए. He would write to people, write appeals कि पैसे चाहिए, इतना पैसा चाहिए, ये चाहिए. प्रिंटिंग के लिए पैसा चाहिए, पैम्फलेट बनाने के लिए पैसे चाहिए, बिजली के लिए पैसे चाहिए, मतलब हर चीज, जनरेटर, भोपू, मतलब यू नेम इट, सबके लिए पैसे चाहिए. That's the other thing that Jean really tried to do. The third thing he did was he showed up. Jean Dress showed up in the panchayat in October, went around to villages, spoke to media with Sanjay next to him. Matlab, he did everything he can. And of course, if you look at the news reels and stuff from then, or the newspaper articles, they're like, माननीय अर्थशास्त्री जॉन ड्रेस क्यों है मुजफ्फरपुर में, is the question. And then they'll be like, oh, संजय सानी के लिए कैंपेन चल रहा है. So he really has done a lot for the campaign, and that kind of created a momentum building into it. And it was very exciting, that period. And I must say that I had a very good grip on Sanjay's chances of winning, which was super low. I knew it from the first day till about 10 days before the election. तब तक मुझे लगा कि ये हारेगा, बट कुछ तो वोट आएगा इसके पास, बट ये हारेगा. That I always knew. And then, there was a fatal flaw in
my survey methodology, where I didn't know this, but they had sent out an automated voice call to all my survey respondents for the last round of survey, saying संजय सानी को वोट करो. मुझे ये पता नहीं था. हमने सर्वे रन किया. Suddenly we saw Sanjay Sahini ka popularity has gone up from whatever people saying they'll vote for him has gone up from 10% to 30%. And that was completely because the previous night an automated voice call had gone. And suddenly everyone knew about Sanjay and they must have all got the call. And they must have wondered कौन है Sanjay Sahini जो भी है. And अगला दिन कोई call करता है तो even if you're not going to vote for him, you're like यार कल रात को call आया, वही लोग पूछ रहे होंगे कि vote करेंगे या नहीं, तो they said yes. And that completely flipped my own understanding of the campaign, which is very, as an economist, I'm kind of ashamed to admit, as someone who's run multiple surveys, I should have taken care of this. But मुझे लगा कि बाप रे कुछ हो गया है, मतलब something has changed since the last survey. ये actually जीत सकता है. ये कितना, मतलब मुझे मुझे अपने मूवी के क्लाइमेक्स का पहले का एक सीन मिल गया, लाइक द मूवी 5 minutes before the climax. So it was like I was jumping. I'm sitting in DC. I'm telling my wife, and she's like, "देखो वो बोली, उसने भी बोली कि तुमको राम गोवा से बात करना चाहिए." तो मैंने बोला यार पता नहीं अब, it's just bizarre. And so सबको मैंने बोला कि हमारे दोस्त यहाँ पे बात कर रहा था, संजय को बोला फोन पे कि भाई बहुत बढ़िया कैंपेन आपने चलाया, कि मुझे लग रहा है कि आपका चांसेस है. So wrong, like completely wrong. And yeah, so that's basically what happened in the lead up. Correct. And obviously then we obviously learned that Sanjay got, उनका वोट शेयर बहुत कम था, वो मैं बड़ा सरप्राइज था जान के. So मुझे मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमारा polls में before that last survey it was 9% was what his vote share was supposed to be. He ended up with 3%, 2.53%. So there's a gap, okay, between what people said they'll do and what they ended up voting. I spoke to a few people. They said कि independents के लिए हमेशा प्री पोल्स में ज्यादा लोग बोलते हैं हम वोट करेंगे, but around voting day party workers kind of usually make them flip. How do they make them flip? They ferry them to the polling booth और ये सब, और बोलते हैं कि चलो यार कर दे यार, मतलब हम आपको लेके जा रहे हैं. एंड तब तक एक हवा बनता है, लास्ट 2-3 डेज में हवा बनता है कि अच्छा इसका तो नहीं होने वाला है, संजय जी का पक्का नहीं होगा, तो वेस्ट मत करो अपना वोट. तो जब आप मतलब दृढ़ संकल्प करके आप सोचते हो कि नहीं इस बार करूंगा, बट देन लास्ट 2-3 डेज में आपका बदलता है. तो मेरा जो 9% एस्टिमेट था वो एक्चुअली एंडेड अप बीइंग 2.53. आई थिंक दैट इज माय बेस्ट गेस फॉर व्हाई इट वाज सो मच लोअर देन व्हाट आई थॉट इट विल बी. क्योंकि मैंने संजय को बोला कि जो भी होगा 10,000 वोट तो आपको कम से कम मिलेगा, जबकि उनको मिला कुछ 4,900 800 ऐसा कुछ मिला. एंड 10,000 इज स्टिल नॉट मच, इट्स 5% ऑफ ऑल वोट्स और समथिंग लाइक दैट. सो या इट वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग, बट यस. बट उनका एक जो कैपिटल बन गया 4-5,000 वोट्स का, वो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी गुड. एक Yeah, it is very good. And of course, he was the undisputed vote winner by a big margin in all the polling booths in his panchayat and Mahatmanyari, the two main panchayats where the Sangathan started. And he got votes from everywhere else, so he was pretty happy with that. And his name became popular; people got to know him. So there were all these other benefits. But again, amazingly, Sanjay, the lesson he taught me there was also that as soon as a loss happened, he didn't answer the phone for 1 or 2 days. He was a bit down. But by the third day, Sanjay had already decided कि अगला क्या करना है. मतलब he was like अच्छा ठीक है, ये हुआ, ऐसे हुआ, जो हुआ सो हुआ. He's like अब मैं नया चीज कुछ सोच रहा हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना. The amazing thing was he was teaching all of us कि हमारे लाइफ में failures always come, but we should always keep dreaming because that's एब्सोल्युटली. how we make progress, by dreaming. एंड आपका और उनका रिलेशनशिप कैसा रहा, मतलब डिड इट चेंज बिकॉज आपके यहाँ से थोड़ा एरर्स हो गए थे, या मे बी शायद आप उतना फंड रेज नहीं कर पाए, या बिकॉज ऑब्वियसली इट कुड बी स्मॉल थिंग्स बट यू नेवर नो, राइट? So the errors did matter because Sanjay thought every survey I ran was an error. हर बार मैं जाके कॉल करके बोलता कि 9% आपका है, 8%. यू वुड बी लाइक नहीं नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, हमारा तो कम से कम 30% होना चाहिए. ही हैड ऑल दीज नोशंस कि ही इज डूइंग रियली वेल. So I don't think it affected him at all that my last survey was an error. In fact, he said, "Oh," and I told him also कि मुझे लगा कि आपका और आएगा, but ठीक है. On the day of the, I think I write about this in the book. Day of the counting भी मैंने उनको counsel किया. मैंने बोला कि जो भी हो जाए, you ran a great campaign. I'm very happy. I'm very proud of what you did.
Our relationship was not affected much by the campaign. We are actually very involved in at least in each other's lives in some ways, in the sense that I talk to his daughter on WhatsApp. We kind of communicate every now and then. He's much more than just much more than just an activist I support. He's a friend, like you're saying. He's a brother. He's someone I talk to very often. My wife used to say ki, you married me, but the person you love is the guy who calls you up at 12 a.m. मतलब संजय जी का हैबिट ये है कि 11 बजे रात 12 बजे रात इंडिया में भी ऐसे थे कि रात को मतलब 11 बजे को उनका मन करता है कि अब I want to pontificate about the nature of politics or activism, and then he'll call and then we'll have these long chats. So we have always been very close, and my attitude towards him is different from most other people's attitude, partly because I have a deep respect for the life he's leading. So I am objective. I think it's not that I'm not objective about his failures and his inability to see things clearly, but I also think that it is not my place to question some of the things that he does. कि दोस्त है, but दोस्त भी है और इतना मुश्किल एक लाइफ जी रहा है, इतना कठिन चॉइसेस है उनके लाइफ में कि what is the point of trying to say कि आप ये इसको 10% और ऐसे करो या I will not engage with you if you don't do something like this. And here's where I want to say the Sangathan is not perfectly run. I don't write about all of this in the book completely, but there are issues. Many activists who visit the Sangathan always say that it's inspirational, remarkable place, what a movement, but also say that the second tier of leadership is not developed. The Mandesri Devis of the world should actually now be running the Sangathan, not just being one tier below Sanjay or just being another activist. So there's not that much space sometimes in the core committee. It's not as organized. Like all other संगठन्स have these crazy organizational structures. वो सब नहीं है इसमें, बहुत थोड़ा haphazardly चलता है. So there are problems, and those problems are real. But I don't think those problems are so big that they can surmount the true blessing this Sangathan has been for so many people. And so that's how my relationship with Sanjay and the Sangathan has always been. Great. I think, covered length and breadth as much as I thought I wanted to, Sharan. I just, I have this thing कि यार थोड़ा सा और खींच लेते हैं, फिर मौका मिलेगा कि नहीं बात करने का. तो बस एक दो सवाल मेरे बस फाइनल हैं. And zooming out now, Indian state, this large, huge, I don't know what is the right metaphor, huge Yeah, beast, and yeah, you write it in beast, the book. beast is It's right. omnipresent, हर जगह present है. तुम वहां पे तुम पंचायत में जाओगे, तुम रोड बना रहे होगे, तुम्हारे वहां पे बॉर्डर पे जाओगे, तुम्हारा सीआरपीएफ जवान है, Yeah, yeah, लाखों लाखों लेवल के सरकारी लोग हैं, इतना बड़ा पुलिस है, इतना ब्यूरोक्रेट्स है. इंडियन स्टेट इज जस्ट fucking huge, yeah, and it is. And after seeing your book, it becomes so unbelievable. And yes, I mean, at a point you end up thinking कि साला ये इतना बड़ा है इसलिए तो इतना प्रॉब्लम भी इतना बड़ा है. uh, तो what is your take on the Indian state? Like, what should be the vision of the Indian state? And it's a big question that way, but I think, with your experience, I think you may have some thoughts. What is the vision? What do you think should be the India's vision as a state in the next 25 years, by the time we are like at 2050? Okay, so first thing I'll say is while the Indian state is big, there are many parts of the Indian state that are not big enough. It's kind of weird to say it, but let me give an example. Think of number of doctors per capita. It's actually pretty low in India compared to most countries, even in the developing world, compared to even like Sri Lanka, which is really suffering right now. Um, we have much fewer public doctors per capita. Public doctors, not I'm not saying Yeah, all doctors, because we have quacks and all these other people. टीचर्स पर कैपिटा डॉक्टर्स पर कैपिटा ये सब हमारा बहुत कम है इनफैक्ट वी नीड मेनी मोर हॉस्पिटल्स मेनी मोर government hospitals I'm saying district at the district level and much better functioning primary healthcare centers and stuff. So the Indian state should actually expand in some ways. Part of the reason the Indian state hasn't expanded along these dimensions, which is kind of health and education primarily, is because they are a state subjects. um, but more importantly, I think, is that because to bring about
big changes in the functioning of health and education historically has required more than 5 years. बट आपका इलेक्शन हर 5 ईयर पे आता है. तो अगर आप एक बड़ा सा हेल्थ केयर पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसका रिटर्न आपको मिलेगा 10 साल बाद, जब जब तक कोई और आके उसका गेन्स ले लेगा. तो the Indian state has constantly underinvested in elements of governance that reap benefits in the very long run. So we have a very short-run view of how to do things, which is proved sometimes good. Like I think NREGA, PDS are all benefits that you get immediately in the short run. मतलब आप NREGA शुरू करो, 1-2 साल के अंदर गांव में काम मिलता है लोगों को, and then you get votes back from it. So that's useful. Roads, these are things that you get kind of some benefits kind of pretty quickly. But the larger structural issues concerning Indian society is much harder to do. Similarly, so there are many such issues I would say here. Reform of education and health are I think primary. The second thing I would say about the Indian state is that in 20 to 25 years from now, I think that the thing that we really need to try and understand is why is our tax base so low? Because what is the way in which a government can actually grow its resources? Is by taxing better and taxing more. And right now, our tax base is kind of abnormally low. We have to really figure out कि उसको कैसे बढ़ाए, how do we get it closer to what the potential is. And that's an area of focus that I don't think gets some, I mean, within the finance community and stuff, there is some focus, but just nearly not enough. So if you don't kind of, and this is again from the perspective of functioning of the Indian state, where it directly can improve resources. Of course, I can say कि growth पे focus करना चाहिए, ये सब करना चाहिए, तब होगा, तब automatically GDP बढ़ेगा, तो taxes ज़्यादा आएंगे. But I'm saying, what can the Indian state do very concretely? Which I think one of the them is to kind of understand who to levy taxes to, how to update the list of people to levy taxes to, and how to collect that money. Think of it at the panchayat level. एक पंचायत has to be self-sufficient in terms of at least अपना utility bills और अपने जो स्टाफ होते हैं उनका पैसा दे दो. बाकी सब तो रोड वोड का तो आपको ऊपर से पैसा आता है, चलो ले ही लो उसको. बट बेसिक चीजें तो आपको करना चाहिए. कोई एक नॉट वन पंचायत इन बिहार raises taxes that are even close to funding just street lights, public water and staff. कर्नाटका में ही नहीं होता है. कर्नाटका इज अमंग द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ लोकल टैक्स. वो नहीं होता है. सो टैक्स बेस को काइंड ऑफ रेज करना आई थिंक इज लाइक सुपर इंपॉर्टेंट. सो हेल्थ एंड एजुकेशन इज वन. Focus much more on that, and then basically improve the tax base. These are the two big things that I would kind of hope the Indian state kind of focuses much more going forward. बाकी सब चीजें तो होते ही रहेंगे. There will be enough people who will be clamoring for growth and all of these other things to make sure that those things there's pressure. But ये सब चीजों पर pressure इतना नहीं आता है, तो somebody has to put time and investment on stuff like this. So the Indian state will go big before it goes small. If I have to The sum this hope up. is that the Indian state should try and go big. I want to say one other very quick thing on this. I think with the nature of technology that we now have, and I'm not a technological evangelist or anything, but our government has shown us that if we monitor and we have a kind of mission mode, even with education, you can actually show dividends pretty quickly. You just need a good plan and quick monitoring strategies, which you can now do. Monitoring and evaluation of what works, what doesn't. So, given that that is the case, I think we should definitely do much more scientific policy making, much more policy making where you're kind of seeing very quickly कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, किसको improve करें, ये सब थोड़ा, there is a way to bring in more efficiency. I'm a big believer in that. A lot of people say that it's not a structural question. You're kind of arguing on a process level, surface level problem, which is kind of getting better monitoring evaluation. I come from the school that thinks that no, that itself can bring in a lot of efficiency gains. So that's something I would also recommend. हेमा शरण, बहुत मजा आया बात करके. हम रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाए सबसे लंबी कॉन्वर्सेशन का, बट दिस स्टिल गोज एज द सेकंड लॉन्गेस्ट कॉन्वर्सेशन ऑफ लाइट्स That's कैमरा amazing. आजादी. बहुत बहुत मजा आया. इतना टॉपिक्स कवर करे. योर बुक, अमेजिंग बुक, अमेजिंग स्टोरी Thank you. लाइन्स. होप वी मेक दिस as a movie as well. And great. Thank you so much for spending like roughly 3 hours with me and talking your heart out. Thank you so much for being part of the show. Thank you so much, Vandit. This is, as I've said on Twitter also, this is a podcast I'm super fond of. It's such a nice, the basic objective of the podcast is so nice to kind of give people space for voices that don't kind of often make it to the mainstream, and voices that are asking questions of the systems around them. And I'm so glad that I was part of this. So thanks again. Thank you. I'll just stop the recording.